Is my screen is visible, all of you? Yes, sir. Okay. So today we will start teaching support system in this concept, the effective teaching and educational practices. So once again, teaching in a different context. Teaching can be defined as an activity of a providing education to people in the society. Teaching is a mutual interaction between students and teachers. So it is a teaching can defined as an activity that provides the education to people in the society. So that one also we can call teaching. Teaching can be defined as an activity of providing education to people in the society. Then teaching is a mutual interaction between students and teachers. Teacher delivers the content through various modes, different modes. The teacher will delivers the content and the student learn the content. Teaching can be formal as well as informal. It can be done through offline and online mode. So teaching can be formal as well as informal. We already studied that formal, informal and non-formal type of teaching. So formal is what we go to the regular colleges, schools. We will attend the classes daily. There is a rules and regulation for passing attendance. So everything that type of teaching or education we call as a formal teaching or formal education. So informal means what we learn from the society in our home, what our parents will teach. That type of teaching or education is called informal education or informal teaching. So that is in informal teaching, we will not get any certificate or learning. We learned this concept or this thing. So like that, we don't get any certificate. But formal, we get marks card, we get a degree certificate and everything. That is the formal and informal. Another one type is non-formal is a type of education or not. If you take it as a teaching, it is a non-formal teaching. If you consider it as a education, that is non-formal education. Both can be used. So non-formal education or non-formal teaching means it is a flexible one. Here there is a no rules for going the college, attending the classes. You may attend, no attendance will be needed. You may go through examination, and there also you will get the mark sheet and your certificates of completing the courses. That is the non-formal. Through different distance mode of educations, online mode educations, we can enroll the courses and we can clear the courses. That is the non-formal one. So teaching can be formal as well as informal and non-formal may also. It can be done through the offline and online modes. Nowadays, teaching is happening in the offline mode and online mode also. The main purpose of teaching is to ensure that learners learn something and become successful in their life. The main purpose of teaching is, teaching का main purpose क्या होता है? Learner should learn something and become successful in their life. Because of that learning, they will use that learning in their life situations, real life situation, and they should become the successful in their life. That is the purpose of teaching or education. Whatever education we will give to child or persons, they will use that education things, values, and they should become successful in their life. That is the main purpose of teaching. So we learned about teaching methods, teaching, learning. So still now also we are learning about teaching. Why? Because today we are learning with this one, effective teaching. We already learned teaching, but today we are discussing about effective teaching, things that ensure the teaching is effective. We know about teaching, we know about learning, but
when teaching is become effective. So that concept today we are discussing. So what are the criteria, what are the characteristics, what are the things needed for teaching becomes to effective teaching. Effective teaching only brings the some outcomes in the teaching. So that's why how our teaching is, we make that teaching as a effective. That concept today we are studying, things that ensure teaching is effective. So अगर आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, सो क्या क्या करना है हमको. सो विच आर द थिंग्स. सो फर्स्ट वन इज टीचर हैज अडॉप्टेड ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर अडॉप्ट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. So if teacher adopted teacher center method only, then the effective teaching will not happen. So that's why teachers should also adopt, even though teacher center method and with learner center approaches should teacher should adopt, then only the effective teaching will happen. The first thing is teacher has adopted a learner center approach. What is learner center approach? Here learner can ask, interact, discuss with the teacher. So that's why teacher has adopted a learner centered approach. Then teaching is having enough knowledge of subject matter. So next thing is teacher should have, or the instructor, whatever person, the teaching is having enough knowledge of a subject matter. Whichever subject he is teaching, he should have enough knowledge, in-depth knowledge of the subject matter. Without depth knowledge or proper enough knowledge of that subject matter, no one can teach no one can teach effectively. If he himself don't know the subject matter, then there is no effective teaching will happen. That's why teaching is having enough knowledge of subject matter should be there. Then only effective teaching will happen. That is the another thing, when the ensure the teaching is effective. Then teacher is giving feedback to the students. When you will ask the questions to students, or any problems or any situation to students, if student reacts or responds, then you will give the feedback to the students. Yes, your answer is correct, your answer is wrong, you can also do like this, you can tell like this, you can also understand like this. So this type of feedback should be given. Teacher is giving feedback to the students. Feedback should be given to the student about their learning. Then only the teaching will become effective. Otherwise, without feedback, the students or learners don't know about their status. That's why teacher is giving feedback to the students is also one of the things that ensures the teaching is effective. Then teachers are able to solve problems and queries of the students. Yes, टीचर अगर कोई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स लेके आता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड क्वेरीज, प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज लेके आते हैं, the teacher are able to solve that problems and questions or queries of the students. If teacher is unable to solve the problems, then it does not become effective teaching. So these things ensure that your teaching is effective. If teaching become effective, these things are must. All of you understood these 4 points? Yes, sir. If teaching become effective, then these things should be there. That is the concept of these 4 points. See, teacher should adopt the learner center approach. Teacher should have the knowledge of the subject matter, enough knowledge of the subject matter. If कोई भी questions पूछा आपका subject related, you have to be able to answer that subject matter, and you should give the feedback to the students. टीचर्स आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट. अगर कोई बच्चा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम लेके आते हैं आपका सब्जेक्ट कंसर्न, देन you have the able to solve that problems. That is the concept. So all of you understood? I will move the next slide. Next one, the teacher is empathetic. What is empathetic? All of you know that sympathetic. So if teaching should become effective, the teacher should have the empathetic, no sympathy. Sympathy नहीं होना चाहिए, empathy होना चाहिए. टीचर को towards students, the empathy should be there, no sympathy. Sympathy का मतलब क्या होता है? बच्चों का कुछ weakness के देख के हमने sympathy दिखाते. So in teaching become effective, there is a no sympathy, there is a empathy.
एम्पैथी का मतलब क्या है? विथ नोइंग हिज प्रॉब्लम्स आल्सो वी शुड नॉट हाईलाइट दैट प्रॉब्लम्स और उनका डिसएडवांटेजेस को विदाउट हाईलाइटिंग वी शुड टीच. दैट इज द एम्पैथी. टीचर इज एम्पैथेटिक होना चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट. देन ओनली द टीचिंग बिकम effective. Then teaching that ensures learning outcomes for students. हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? द वॉट एवर थिंग वी टीच, द लर्निंग आउटकम शुड बी हैपन इन द स्टूडेंट्स. तो टीचिंग दैट एंश्योर्स द लर्निंग आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल हम कुछ तो सिलेबस का पॉइंट्स और विद ऑब्जेक्टिव्स रख के आपको कॉन्सेप्ट टीच किया. देन whether students are learned or not, the teaching should ensure students are understanding or not, whether they are able to understanding or not, whether they are receiving the concepts or not. So that thing, teaching that ensures the learning outcomes for the student should be there. Then only it is called for effective teaching. अगर learning outcomes हो रहे ये हम ensure नहीं किया क्लास में, अगर बच्चों को समझ में आ रहे नहीं आ रहे ये ensure करना है हमको. So whatever things we are teaching, the learners or students should take that concept in their mind. So we have to ensure the learning outcomes for the students. Then teacher's approach is objective. What is this means? Teacher approach is objective means the subjective means as my perception I do not judge the how the students are thinking or how students are receiving. So teacher should approach as a objective in nature means teacher should think in the position of the students. मैं अगर स्टूडेंट होता तो मुझे क्या लगता था ये कॉन्सेप्ट, ऐसे दिस मेथड ऑफ टीचिंग मुझे कैसे लगता था. इन दैट सेंस द टीचर अप्रोच शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब मैं क्या बोल रहे यही करेक्ट है, सबको समझ में आ रहे है दिस मेथड से, ये सब्जेक्टिव होता है. टीचर्स अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इन द व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, इन द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स में जाके हम थिंक करना है. दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव approach. Teacher's approach is objective. Then only the effective teaching will happens. Then use of teaching aids, teaching learning methods. Teaching में हमने number of teaching aids, using of presentation, audio, video, visuals, and different learning materials, charts, models. So different varieties of teaching aids and teaching learning materials हमने use करके teaching करना है. Then only that will become effective teaching. So these are the things which ensures the effective teaching. Next, instructional variety. In one of the multiple choice question, we answered that instructional variety. This option is there. We also discussed it in previous class. What is instructional variety? Some of you asked the question. Instruction means teaching. So we discussed this point. So that point is here only. So instructional variety means different teaching tools, different teaching methods should be adopted in the teaching. डेली क्लास में जाना है एक ही तरह से पढ़ाई से बच्चों को बोर होता है. सो डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टूल्स, मेथड्स, स्ट्रेटजी को यूज करना है. हमने कभी कभी प्रेजेंटेशन करना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते पूछते टीच करना है. सो डिफरेंट टूल्स को यूज करना है. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मीन्स डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करना है. अगर एक ही तरह हम पढ़ाई टीचिंग करने लगे तो बच्चों को effective teaching नहीं होता है. So every time you have to use different tools, methods. Instructional variety means teaching variety are different of methods, tools को हमने apply करना है. Then only the teaching become the effective teaching. Otherwise it becomes the boring. So that's why if teaching effective करना है आपको, then instructional variety, different methods of teaching tools, different methods of teaching modes we have to adopt in the teaching. Then encourage students to participate in the class. Encourage students to participate in the class. स्टूडेंट्स को हमने मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, पार्टिसिपेट इन द क्लास. क्लास में सुनने के लिए, कुछ क्वेश्चन पूछे तो पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ एक्टिविटी दी है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंटिन्यूअस एनकरेजमेंट चाहिए. अगर आप क्वेश्चन पूछे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर कुछ एक्टिविटी दी कोई भी नहीं कर रहे, सो दैट विल नॉट बिकम ए इफेक्टिव टीचिंग. इफ इफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए,
then encourage the student to participate in the class. So you have to encourage, motivate the students to participate in the class. Then ensure that students are understanding the concept. Once again, we should ensure that स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे, समझ में आ रहे स्टूडेंट्स को, ये एंश्योर करना है. विदाउट एंश्योरिंग, इफ यू गो मूव ऑन टू न्यू कॉन्सेप्ट, द इफेक्टिव टीचिंग विल नॉट हैपन. अगर एक कॉन्सेप्ट से हम दूसरा कॉन्सेप्ट को जा रहे हैं, न्यू थिंग को जा रहे हैं, so we have to ensure whether students are understanding or not. If they are not understanding, we will clear the concept and move on. Otherwise that will not become effective teaching. One step क्लियर नहीं होता है बच्चों को, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में गए विदाउट एंश्योरिंग स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, देन द होल थिंग द स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड द concept. That's why ensure that students are understanding the concept. That is the another thing. Then optimum use of maxims of teaching. So what are the what is this maxims? Maxims का मतलब होता है, these are the number of methods. For example, simple to complex, known to unknown. This type of methods we have to incorporate in the teaching. Maxims का मतलब क्या होता है? These are some rules or methods in the teaching. We will discuss the what are the maximums, different types of maxims in the teaching in the later classes. For just example, simple to complex, we always start the concept or subject with the simple matter to complex. Initially starting only, if you do the complex things, then the students will not understand anything. That's why we go simple to complex and known to unknown. If students are known something, then we start with known things and we will later move on unknown things. As you know about the vata, then we know now we move on different types of vata. So like that, known to unknown, and particular to general, particular things to general things. So like that, the different methods and rules are there in teaching. That things we are called as a maxim. So maxims of optimum use karna hai. So what are the maxims? Different maxims we should study in the later on, or I will provide the notes on these maxims. So just remember optimum use of maxims. Maxims are rules or fundamental settings in the teaching. For example, simple to complex, known to unknown, and indefinite thing to definite thing. So these are the methods, that one we called as a maxims of the teaching. So all of you understood this up to this? Any doubt? Little bit I am fasting because already you are sensitized. You are able to understand this concept easily. That's why I am moving fast. Anyone have any doubt or problem? Hello? 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 No, sir. समझ में आ रहे सबको what I am telling concept? Yes, sir. Okay. If anything is not आपको समझ में नहीं आ रहे, कुछ confusion है, आप बता सकते हो, क्योंकि these are simple things. Just I am explaining the meaning. You can understand easily. Teaching को effective बनाने के लिए what are the things should there? I am explaining that one. Maxims का मतलब क्या है? Different methods, rules are there, like simple to complex, indefinite to definite, like that. Seen to unseen, the number of rules are there. We will discuss the maxims, that teaching maxims. I will provide the notes. So you should use that maxims of teaching in the your teaching. Then only the teaching become the effective teaching. So effective teaching होने के लिए क्या क्या things चाहिए? We study the things that ensure the teaching is effective. If you adopt these things, then teaching become the effective. Then effective teaching involves effective planning. Without planning, the effective teaching नहीं होता है. All these things needs the planning. अगर हमने planning नहीं किया teaching के पहले, class जाने से पहले planning नहीं किया, so effective planning नहीं किया तो effective teaching नहीं होता है. That is the concept. Effective teaching involves the effective planning. Planning includes finding answer to the following questions. Planning का मतलब क्या है?
अगर if you put these questions, whether I am able to solve these questions, answer the questions myself, then that is the planning. For example, what are the educational goals to be achieved before going to the class? In this class, what are the objectives of this class? What are the objectives of this particular topic? You have to set the goals or objectives of that particular concept or subject before going the class. Then if you answer as these are the objectives of this today's class, the I will deliver this content, and these are the my objectives, then it is a effective planning. Without objectives, what should I teach, what are the outcomes today I want, if you don't know, then it is not a effective planning. Then what educational experiences are to be provided in order to achieve the objectives? अगर आपने एक objective रख के गए हैं, so what are the educational experiences are to be provided in order to achieve the objectives? For example, बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट का बारे में समझने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है. व्हाट इज दिनचर्या, दिनचर्या का कंटेंट, व्हाट इज दिनचर्या. अल्टीमेटली आफ्टर द क्लास the student should be able to understand the what are the दिनचर्या concepts. दिनचर्या में क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, वही दिनचर्या इज इम्पोर्टेंट. ये बच्चों को समझ में आ गए तो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव. सो दिस ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के लिए, अचीव करने के लिए some experience आवश्यकता है, तो we should provide that experience. For example, danta davan. Danta davan, simply I will tell the कदीरा कदीरा से करना है, ककुबादिकम श्लोका बोल के ये सारे ड्रग से मैंने दंत दावन करना है बोल के आया, तो that will not affect you. The experience should be there. Really, they should use the twigs of the different plants which are available in our garden. If you give the work, collect the twigs and do the danta davana with that twigs, then that experiences you should provide in order to achieve the that objectives. अगर दंत दावन का बारे में उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, रियली उनको समझना चाहिए, then we have to give the experience. What educational experience are to be provided in order to achieve the objectives? मुझे ये दिनचर्या, ये दंत दावन कॉन्सेप्ट, अदर थिंग्स को effectively objective this objectives को अचीव करने के लिए which are experience to be provided. मैंने क्या बोलता है, ट्विग्स को कलेक्ट करो, निम्ब से दंत दावन करो, आपका एक्सपीरियंस करो, then you will understand or you will achieve the objectives of that content. अभ्यंग करो, अभ्यंग डेली घर में करो, then you will get the experience and you will also understand the concept of abhyangas. To achieve our objectives, what are the experience to be provided to the students or learners? That things we have to kept in mind. So ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एक्सपीरियंस कुछ चाहिए तो हमने प्रोवाइड करना है बच्चों को. अदरवाइज विदाउट एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं होता है. सो सिंपली वी विल टेल दी कदीर करना है, अर्क करना है, ककुबादिक से करना है, whether really these are available, what is the experience with different twigs से हम दंत दावन करें तो what are the sensation they feel, whether त्रिफला पाउडर से दंत दावन किए तो उनको क्या होता है, ड्राइनेस होता है, सलाइवेशन होता है, टेस्ट का कैसे परसेप्शन होता है, त्रिकटु से किया तो क्या होता है, वेदर ऑयल और मधु के साथ मिक्स करके किया. विदाउट एक्सपीरियंसेस द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी objective of that content will not happen. That's why educational experiences are to be provided in order to achieve the objectives. समझ में आ गया ये concept this sentence का, what educational experiences are to be provided in order to achieve the objectives. For example, another example, physiology में अब blood pressure का measurement कैसे करना है बोलता है बच्चों को फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में. दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, कफ कैसे बांधना है. सिंपली इफ यू गो थ्रू द theory one, then your objective is not fulfilled. Ultimately the student should measure the blood pressure in the patients or in persons. If you give the experience of measuring the blood pressure, अगर रियली आप एक्सपीरियंस किया बच्चों को ब्लड रियली स्पिग्मोमोनोमीटर ला के अगर कफ बांधने का, दिस इज द सिस्टोलिक, दिस इज द डायस्टोलिक, हाउ वी शुड काउंट द सिस्टोलिक डायस्टोलिक, हाउ वी शुड मेजर, दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, then you have achieved the
objective of teaching that measuring of blood pressure. That is the concept of this sentence. समझ में आ गया आपको? All of you? Yes, Hello? sir. ओके सो एक्सपीरियंस चाहिए. एक्सपीरियंस मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. दैट ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, व्हाट एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स नीड, लर्नर्स नीड, वी शुड प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंसेस. दैट इज द कॉन्सेप्ट. अगर विदाउट एक्सपीरियंसेस सिर्फ सिंपली आप बीपी मेजर करना थियोरेटिकली बता तो द स्टूडेंट्स विल नॉट रियली अंडरस्टैंड दी. सिंपली बायट करते हो, सिस्टोलिक ये होते हैं, डायस्टोलिक ये होते हैं, कफ को ऐसे बांधना है, आर्टरी लेवल में पैरेलल आना है, ऐसे बायट करता है, लेकिन रियली यू आर नॉट अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव्स. अल्टीमेटली द स्टूडेंट शुड मेजर द ब्लड प्रेशर. वो होने के लिए आपको स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस देना है टू मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. दैट इज द कॉन्सेप्ट. Then how can these educational objectives be organized? So एक organization और methodology होना चाहिए. हम objectives रखते हैं ना education में, objective होना चाहिए. So methodology होना चाहिए. randomly एक के बाद एक objective नहीं, एक objectives के बाद next objective achieve करने के लिए एक methodology use करना है आपको, एक arrangement होना चाहिए. That type of organized we should do. Then only the objectives will be fulfilled. Simple objectives or simple concept पता होने से पहले हम complex concept और things को हमने teach किया तो student will not understood. So methodology पता होना चाहिए. Which chapter के बाद कौन सा chapter हम टीच करना है, और विच प्रोसीजर के बाद हम कौन सा प्रोसीजर को सिखाना है बच्चों को. मेथोडोलॉजी शुड बी देयर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शुड बी देयर. देन ओनली द ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड. सो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, if haphazardly if you are doing the things, then the proper achievement of objectives will not happen. That is the thing. Organize होना चाहिए. फर्स्ट टर्म्स में हम क्या सिलेबस कवर करना है, सेकेंड टर्म में क्या करना है, थर्ड टर्म में क्या करना है. So these are the things we should objectives should be kept in the organized manner. Objectives का मतलब होता है what we should do ultimately, what are the outcomes we should find in the student. That is the objectives. So our objectives should be organized in the methodology manner में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम रिसर्च करते टाइम में भी हम मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेरी रिव्यू, लाइक दैट सब मेथोडोलॉजी इज देयर. सो हियर आल्सो वी शुड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमको ऑब्जेक्टिव्स को रखना है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. देन हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड? सो मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा था, ऑब्जेक्टिव अचीव किया क्या नहीं किया, इसको एवेल्यूएशन करना है. कैसे एवेल्यूएशन करते हैं हम? सो दैट एवेल्यूएशन मेथड्स आल्सो वी शुड नो. रिगार्डिंग एवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी in detail in the next classes. The evaluation is another major topic. I will teach in the later on, because before this we should understand all these general things. So evaluation, how can it be determined that objectives are achieved? अब आपने क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया, ये कैसे आप डिटरमिन करता है? दैट इज एवेल्यूएशन. इफ यू आंसर ऑल दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन it is you can evolve the your planning is effective, your teaching is effective. अपने आप ये क्वेश्चंस को डालना है एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. यस, मैंने ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, व्हाट आर द गोल्स आई शुड अचीव इन दिस क्लास और दिस ट्राइमेस्टर. सो लाइक दैट दिस क्वेश्चंस अपने आप क्वेश्चन करना है. इफ यू फाउंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन योर प्लानिंग इज इफेक्टिव प्लानिंग. अगर आपको इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहे, सो यू आर नॉट prepared, you are not planned effective planning. That is the concept. समझ में आ गए? What is the effective planning? Effective planning का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स रखना है, कंटेंट को कैसे डिलीवर करता है वो कंटेंट हमारे पास तैयार होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होना चाहिए, एंड एवेल्यूएशन, हाउ आई विल एवेल्यूएट whether I achieved my objectives or not. These things होना चाहिए. That is the effective planning. Effective teaching के लिए effective planning. Even teach, not only teaching, if
Anything you do without planning, without proper planning, nothing will happen in a good manner. That is the concept. Effective teaching के लिए तो effective planning होना चाहिए. Simply I will read this subject matter in the classroom, or simply I will read the textbook. That will not happen. So effective teaching होना है तो effective planning जरूरी है. Points that are not a part of effective teaching. अभी हमने ये पॉइंट्स पढ़ते ना, these are not a part of effective teaching, whether these things are not affecting the effective teaching. For example, socio-economic background of a students and teacher. These socio-economic background of student and teacher effective teaching का part नहीं होना चाहिए. Whether student में poor or rich, teacher में poor or rich, this should not affect the effective teaching. That is the concept. Points that are not a part of effective teaching. Effective teaching में ये सारी चीजें नहीं आना चाहिए. Socio-economic background of the students and teacher. पर्सनल कांटेक्ट विथ स्टूडेंट्स पेरेंट्स. अगर कोई स्टूडेंट्स का पेरेंट्स मुझे पहचान है, सो उसके वजह से मेरा इफेक्टिव टीचिंग का कुछ लेना देना नहीं. वेदर स्टूडेंट का पेरेंट्स पता है नहीं पता है, आई शुड डू द इफेक्टिव टीचिंग. सो दिस थिंग्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग. इसके वजह से हमारा टीचिंग हम इफेक्टिव करते हैं. सो दैट इज द नॉट कंडीशन. सो शोविंग द सिंपैथी, सिंपैथी नहीं दिखाना है बच्चों को हमको. So showing the sympathy is not a part of effective teaching. अगर आप sympathy दिखा रहे हैं, so that is not a part of effective teaching. You should show the empathy, not sympathy in the effective teaching. Teaching हो सकते हैं अगर sympathy है तो, अगर effective teaching चाहिए तो sympathy नहीं चाहिए, हमको empathy चाहिए. That is the concept. With this we can teach, but effective teaching, see this term objective, effective teaching पढ़ रहे हैं हम, not only teaching. Today we are focusing effective teaching. Effective teaching होना चाहिए तो these are not part of the our teaching. Showing the sympathy, sympathy नहीं दिखाना है बच्चों को, empathy दिखाना है. Then inferring in personal matters of the interfering the in personal matters of the students. Students का personal matters में हमको interfere नहीं करना है. That is the concept. Being autocratic, authoritative nature of teaching हमने initial classes में पढ़ाई के था. Authoritative means do what I am telling, do what I as I told, as how as my instruction. So autocratic नहीं होना चाहिए. That is the concept. Autocratic or authoritative in nature of teaching we already discussed. That type of teaching is not a part of effective teaching. अगर हम ऐसा authoritative teaching कर रहे तो the teaching will not become the effective teaching. Then being autocratic नहीं होना चाहिए हमको, democratic होना चाहिए. Autocratic हुआ तो effective teaching नहीं होता. अगर democratic हुआ तो effective teaching होता है. That is the concept. Focusing on teacher centered approach only. अगर हमने lecture method use कर रहे हैं, only simply कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, टीचर सेंटर मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, देन द टीचिंग विल नॉट बिकम इफेक्टिव. So if you focus on teacher center as well as learner center also, if you focus, then the teaching become the effective. Or you are only focusing on teacher center approach only. See this sentence, focusing on a teacher center approach only means if you are focusing on teacher center only, then the teaching does not become effective. If you focus on both teacher center, learner center, mixed method, then it will effective teaching. If you are only concentrating on teacher center, if you are not allowing students to discuss, interact, then it will not become the effective teaching. That is the concept. Focus on teacher center approach only means you are only approaching the teacher centers, then also the teaching does not become effective. Then showing favoritism. So किसी बच्चे के लिए फेवर करना है और एक बच्चे के लिए ये करना है, वो फेवरिज्म नहीं करना है. This should not be part of the teaching. अगर आप फेवरिज्म कर रहे हैं, then effective teaching नहीं कर सकते आप. That is the concept. So आपका effectiveness of teaching has to be judged in terms of, आपका effectiveness इस इन terms में हम जज कर सकते हैं. अगर हाँ आपने effective teaching कर रहे हैं, how can I judge your teaching is effective?
In terms of course coverage means in particular stipulated time you complete the syllabus or subject. Course coverage किया आपने, so that is the one of the criteria. I will judge your teaching is effective. Then students interest. Students are getting interested in your subject, or students are generating the interest to study your subject, or they are interested to learn your subject. Then students को interest हो रहा है, students के अंदर interest generate हो रहा है. That is also based on this also I can judge your teaching is effective. Then use of teaching aids. If you are using different teaching aids, audio, video and online methods, some of the other teaching materials, teaching aids use कर रहे हैं, help teaching aids means अदर हेल्पिंग थिंग्स यू आर यूज कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल कुछ तो कॉम्प्लेक्स चीज को विजुअलाइज करने के लिए आप कुछ वीडियो दिखा के चला के दिखा रहे हैं, सो यू आर यूजिंग डिफरेंट technologies, modern advancements in a teaching, then also I can judge that your teaching is effective. Then learning outcomes of the student. Finally, the learning outcomes of the students होना चाहिए. अगर after the your class, after the your subject, the student should know about the concept of your subject or things whatever you teach in the classroom. So outcome होना चाहिए. अगर आपका whatever you are teaching in the classroom, अगर outcome नहीं हो रहे, बच्चों को एग्जाम में नहीं लिख पा रहे, और whatever things students are not giving any outcomes in terms of results or knowledge or application, so then also I can't tell that your teaching is effectively नहीं हो रहे. So अगर learning outcomes of students are good, outcome अच्छे तरह से आ रहे हैं, then I can judge that your teaching is effective. अगर learning outcomes of student poor हो रहे, then it is not a effective teaching. I can judge by seeing all of these 4 points. I will judge whether your teaching is going effective or simply you are teaching. So I hope anyone can judge the effectiveness of teaching. In terms of course coverage, you should cover the syllabus in time. Students should get interest, use of teaching aids, learning outcome should be achieved. Then based on this, I can judge the effectiveness of teaching has to be, you achieve the effectiveness of the teaching. All of you understood? समझ में आ रही है क्या है? Effectiveness of teaching has to be judged in terms of, कोई टीच कर रहे, whether he is teaching effectively or not, how can I judge? I can judge in terms of course coverage, students interest, use of teaching aids, learning outcomes of the students. समझ में आ गई ये concept आपको? All of you, please reply. Yes, sir. Huh? Yes, sir. So teaching effective होने के लिए certain behaviors are there. उसमें 2 types आते हैं. ये one is key behaviors, another one is helping behaviors. So हमको teaching effective बनाना है तो this key behaviors, effective teaching key behaviors को हमने follow करना है. Without these key behaviors, the teaching should not becomes effective. So teaching को effective करना है तो what are the key behaviors? These are the key behaviors, means fundamental behaviors. Without these behaviors, the teaching will not become effective. So effective teaching का key behaviors क्या है, fundamental basic behaviors क्या है, we will study now. So effect of teaching key behaviors. All of you understood what is the meaning of effective teaching key behaviors? Key behaviors मतलब ये behaviors basically होना चाहिए, mandatory होना चाहिए, then only the teaching is effective. That is the concept of key behaviors. Without these behaviors, the teaching will not become effective. The first key behavior क्या है? Lesson clarity. Lessons को clarity. इसका मतलब क्या है? Ideas should be clear to all learners at all levels. Ideas should be conveyed in a clear step-by-step order. They should be uncomplicated and with minimal distractions. लर्नर्स को क्या होना चाहिए? अगर मैं कुछ आइडिया और कॉन्सेप्ट दे रहे, कुछ लेसन्स टीच कर रहे, दैट लेसन का बारे में और आइडिया इन जनरल दे आर यूजिंग आइडियाज, दैट लेसन्स का बारे में और कॉन्सेप्ट का बारे में ऑल लर्नर्स को ऑल लेवल में
क्लियर होना चाहिए in the memory level, cognitive level, psychomotor level, whatever the levels related to that concept, all learners को all level में clear होना चाहिए. आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को, हम सब्जेक्ट को ऐसे कन्वे करना है, क्लियर कन्वे करना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. कंफ्यूजन नहीं रखना है, बच्चों को डाउट नहीं रखना है. वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर. दैट इज द आइडिया शुड बी कन्वेड इन ए क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में हमको क्लियर करना है. दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड विथ मिनिमल डिस्ट्रैक्शन. आइडियाज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अनकॉम्प्लिकेटेड करके. सो सम मिनिमल डिस्ट्रैक्शन रहता है, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन द डिस्ट्रैक्शन शुड बी वेरी मिनिमल. द आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एट ऑल लेवल. It should be conveyed in a clear step-by-step order. They should be uncomplicated with minimal distraction or no distraction. So this is the lesson clarity. This behavior is the key behavior, first key behavior. अगर आपको क्लास ले रहे, टीचिंग कर रहे, लेसन क्लैरिटी होना चाहिए. दिस इज द की बिहेवियर. प्लीज कॉन्सेंट्रेट से सुनिए, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम. सो लेसन क्लैरिटी होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट की बिहेवियर ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग. इधर एक टिप दिया है, यूजिंग एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए लेसन एंड समरी एट द एंड ऑफ द लेसन आर वेरी हेल्पफुल इन द क्लैरिटी. ऑर्गेनाइज करना है बिगिनिंग ऑफ द लेसन, at the end of the lesson we should give the summary of that chapter or concept. It will helpful for the clarity. So lesson clarity मतलब आप क्या सिखा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी मिलना चाहिए regarding that concept or that subject. That is the first key behavior. Second key behavior क्या है? Instructional variety. So used a variety of teaching tools, materials, activities, space and displays. That is, use a variety of teaching tools. Instructional variety होना चाहिए. This is also key behavior. अगर आप instructional variety नहीं यूज कर रहे, simply daily एक ही तरह से आप teach कर रहे, then it will not become an effective teaching. Key behavior क्या है effective teaching का? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना चाहिए. यूज ए डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स, वेदर इट मे बी यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, it may be uses of different materials, it may be activities, by doing different activities or displays, space, whatever thing you should do. So instructional variety teaching, instruction means in the sense of teaching, variety means variety different methods should be applied, then only the teaching become effective. This is also key behavior of the effective teaching. Used a variation in voice and gesture, rewards and reinforces. So daily एक ही तरह हम बोलने गए तो बच्चों को बोर होते हैं. वेरिएशन इन आवर वॉइस में वेरिएशन होना, हमारा गेस्चर में चेंज होना. सो रिवार्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट्स. अगर हमने हर एक क्लास में बच्चों क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया तो स्टैंड अप बोल के बोलते हैं. हर क्लास में वही पनिशमेंट देने लगे तो बच्चे बोर होते हैं. एक एक दिन एक एक तरह का पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स. हर एक दिन अगर बच्चे आंसर दे रहे, हर एक दिन हम क्लैपिंग करवा रहे हैं अदर बच्चों से, दैट विल बी सेम मेथड. हर एक टाइम अलग अलग मेथड हमको यूज करना है फॉर रिवार्ड्स एंड रीइंफोर्सेस. सो देन द टीचिंग बिकम इफेक्टिव, अदरवाइज इट विल बिकम बोरिंग. सो इधर एक टिप दिया है, व्हेन क्वेश्चनिंग यूज ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, फैक्ट क्वेश्चंस, प्रोसेस क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चंस एक ही तरह क्वेश्चंस नहीं पूछना है, डिफरेंट हमको क्वेश्चन बना के वैरायटी बना के क्वेश्चंस पूछना है. सो फैक्ट के बेस क्वेश्चन पूछना है, प्रोसेस का बेस क्वेश्चन पूछना है, सो कन्वर्जेंट क्वेश्चन. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना है. व्हाट इज द दंत धावना, फॉर एग्जांपल दंत धावन क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा है. सो दंत धावना मतलब श्लोक बताया, द ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठे, ये होने के बाद. सो नेक्स्ट आई विल आस्क whether these tweaks are available today also, nowadays also, whether we are able to collect the all the tweaks nowadays also. That is the different question, the variety of question.
Simply, if you ask the what is Dantadavana, the student will tell the sloka. Then we have to modify the questions. Really, all these tweaks are available nowadays. How many of you are using the tweaks? So, what is the in market में मिलता है नहीं मिलता है tweaks? So, why the people are not using tweaks? अगर इतना benefit है दंत धावन के लिए, why we are not using दंत धावन के लिए tweaks नहीं use कर रहे? So this type of questions if you put, then the student will think and the class become very interesting. अगर हमने दंत धावन में जोरा चर्दी अतिसार में दंत धावन नहीं कर रहे, so this is the fact question, contraindication of danta davana, that is fact based question. Simply the student will tell the sloka, why जोरा में नहीं करना है दंत धावन, what is the why. अगर वाई बोल के क्वेश्चन पूछा तो द स्टूडेंट विल गेट सम न्यू इंटरेस्ट. ज्वर में क्यों नहीं बताया दंत धावन किए तो क्या होता है, चर्दी में क्यों नहीं करने को बोला है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग विल क्रिएट द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. अगर एक ही तरह से मेथड्स हमने यूज करने लगे, एक ही तरह का क्वेश्चन पूछने लगे, द स्टूडेंट्स विल गेट फॉर. स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ मेथड्स को हमको अप्लाई करना है. दैट इज द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. अगर हर एक टीचर आ रहे वही पूछ रहे हो दंत धावना ब्राह्मी मुहूर्त सो अभ्यंग, सो स्टूडेंट्स विल गेट बोर्ड. वही क्वेश्चन को आप अलग तरीके से, अगर अभ्यंग को इतना बेनिफिट बता रहे, सो हाउ विल वी मेजर द बेनिफिट ऑफ अभ्यंग. सो अभ्यंग से ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको कैसे पता चलता है, वही क्वेश्चन को हम अलग तरीके से पूछ रहे. सो दीज आर दी थिंग्स. अगर हमारा आयुर्वेद में अंजन बोल रहा है, सो अंजन मॉडर्न ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करते जनरली. व्हाई दे आर नॉट रेकमेंडिंग? हमारे ट्रेडिशन में तो अंजन लगाओ बोल रहे, बच्चों को भी ट्रेडिशनली प्रिपेयर किया हुआ अंजन लगा रहे. सो मॉडर्न पेडियाट्रिस्ट को पूछे तो अंजन मत लगाओ बोलते. व्हाई दे आर नॉट एडवाइजिंग अंजना? अगर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पूछने लगे तो द स्टूडेंट्स विल गेट द इंटरेस्ट. अदरवाइज what is the anjana, types of anjana, this type of questions or this type of instructional variety or methods will not create the effective teaching. That is the instructional variety. हमको क्या पता है उसको different क्वेश्चन बना के different मेथड से हमको टीच करना. That is the instructional variety. You have to remember, this is important point. Third one, teacher task orientation. What is this? To maximize the time spent teaching, be sure to handle inevitable interruptions quickly, expedite the giving and collecting the materials, prevent or quickly put and to distracting behavior, organize lessons well and establish smooth transitions. इसका मतलब क्या होता है? टीचर का टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 आवर का क्लासरूम है, क्लासरूम जाने के बाद मैं क्या वर्क देने वाला हूँ, क्या टीच करने वाला हूं. अगर कुछ इंटरप्शन हो गया, कुछ बच्चे ने डिस्ट्रैक्ट किया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, सो हाउ आई विल सॉल्व दैट इंटरप्शन एंड आई विल कवर दैट टॉपिक. मुझे दिनचर्या आज खत्म करना है क्लास में. अगर कोई बच्चे ने क्लास में डिस्टर्ब किया, सो हाउ विल आई सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग एंड how I will quickly resolve that distraction and I will continue the class. So that type of orientation we should have in the before going the classroom. That is the teacher task orientation. मैंने 40 minutes में क्या क्या cover करना है. This type of orientation we should have the prior to going to the teacher. Orientation का मतलब एक planning होना चाहिए, एक orientation होना चाहिए. अगर मैंने आज क्लास में इतना कवर कर रहे, अगर कवर करने को नहीं हुआ तो लास्ट में मैंने क्या समरी करना है, कैसे स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी रखना है. सो दिस टाइप ऑफ टीचर टास्क ओरिएंटेशन को की बिहेवियर मानता है. अगर टीचर टास्क ओरिएंटेशन ये ओरिएंटेशन नहीं है टीचर को, देन द टीचिंग विल नॉट बिकम द इफेक्टिव. मुझे इतना पॉइंट्स कवर करना ही है आज क्लास में, देन ओनली I will cover the syllabus in this term. So this orientation should be there. टीचर का टास्क रहता है ना, अगर मेरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा है लास्ट मिनट तक, 5 मिनट से बचा है, इवन आई शुड आल्सो टेक द अटेंडेंस आल्सो. सो देन अगर मुझे 5 मिनट अटेंडेंस लेना है तो कैसे लेना है, वेदर आई शुड टेक द ओनली एब्सेंटीज नंबर
or as a regular I will take the all the numbers one by one, 1 2 3. So this type of orientation should there. अगर मैंने कवर किया 40 मिनट्स में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आई विल टेक दी अटेंडेंस इन ए डेली लाइक प्रोसीजर. अगर कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गए, सो एट द एंड हाउ आई विल टेक दी अटेंडेंस. और अगर कुछ मटेरियल देना है, बच्चों को नोट्स लिखवाना है, हाउ आई विल क्विकली डिलीवर दी दैट मटेरियल. सो दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेशन शुड बी देयर इन द टीचर. दैट इज द की बिहेवियर ऑफ टीचर टास्क ओरिएंटेशन. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. ओरिएंटेशन हमको प्रैक्टिस करते करते होता है. सो ओरिएंटेशन पहले होना चाहिए. दैट इज द ओरिएंटेशन. कैसे होते हैं? बाय सीइंग, बाय एक्सपीरियंस आपको होता है. सो विदाउट ओरिएंटेशन इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता है. हम डायरेक्टली क्लासरूम में गए, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, देन हमको एक घबराना होता है, कुछ क्या बोलने को चाहते हैं वो नहीं बोल सकते और इफेक्टिवली टीच नहीं कर सकते. सो वही हमको पहले ही ओरिएंटेशन है, क्लास में ऐसे ऐसे चीजें होता है, इसका बारे में हमको अनुभव है थोड़ा. सो देन द टास्क विल बी इजी, वी कैन हैंडल द इजी. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टीचर टास्क ओरिएंटेशन. सो प्रिपेयर होना चाहिए बस. ओरिएंटेशन मतलब बी एज प्रिपेयर्ड एज पॉसिबल. कौन सा क्लास के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम प्रिपेयर होना चाहिए. दैट इज द ओरिएंटेशन, टीचर टास्क ओरिएंटेशन. देन फोर्थ वन इज engagement in the learning process. Constantly monitor any seat work or group work. What does mean that? Constantly monitor any seat work and group work. Set rules for when student can leave class without disruption. Keep a daily schedule to minimize confusion of students. Give independent work that is interesting. For example, आपने कुछ वर्क दिया क्लास में, राइट डाउन दी दिस आंसर्स. अगर सिंगल पर्सन को दिया और ग्रुप को दिया, देन हाउ वी विल मॉनिटर दैट स्टूडेंट्स आर ग्रुप. कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एनी सीट वर्क मींस एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट को आप वर्क दिया और ग्रुप वर्क दिया. आप 10 लोग ये क्वेश्चन को आंसर ढूंढो, आप 10 लोग ये क्वेश्चन को आंसर ढूंढो, वो एक वर्क दिया. देन हाउ यू विल मॉनिटर दैट थिंग. दैट इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एनी सीट वर्क और ग्रुप वर्क. सेट रूल्स फॉर व्हेन स्टूडेंट्स कैन लीव द क्लास विदाउट डिस्टर्ब. बच्चों को हमने सर्टेन रूल्स को बोलना है. अगर क्लास में कोई स्टूडेंट्स को कुछ हेल्थ इश्यू और अदर पर्सनल इश्यू रहते हैं, दैट टाइम विदाउट आस्किंग द परमिशन दे कैन लीव द क्लास विदाउट डिस्ट्रप्शन. वो कौन सा कंडीशन है? व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट? वी हैव टू सेट द रूल्स फॉर व्हेन स्टूडेंट्स कैन लीव क्लास विदाउट डिस्ट्रप्शन. अगर आप सीरियसली कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लास करते रहते, कोई आके मुझे इधर इसके लिए जाना है, सो दैट टाइम द डिस्ट्रैक्शन विल हैपन. सो सर्टेन कंडीशन आप पहले ही बोलना है, ऐसे ऐसे कंडीशन है तो आप सीधा विदाउट आस्किंग मी यू कैन लीव द क्लास. ऐसे रूल्स हमने पहले बनाना है. सो देन ओनली द लर्निंग प्रोसेस विल happen. Then keep daily schedule to minimize confusion of students. Daily schedule करना है, confusion नहीं होना है बच्चों को. Schedule के अनुसार हमने learning, today ये concept करना है, today tomorrow is मेरा class है, tomorrow we will discuss this thing. So schedule होना चाहिए. Because of that the confusion of students will not happen. अगर schedule नहीं है तो क्या करते बच्चे? सर आपका क्लास नहीं था, हम आपका नोट्स नहीं लाए आज, वो सर का है बोल के हमने उनका लाया. सो स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूजन. सो दैट्स व्हाई इट इज डेली शेड्यूल को मेंटेन करना है. एंड इंडिपेंडेंट वर्क देने का जरूर है. अगर हमने इंडिविजुअल बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस देके, उनका कैपेसिटी देके भी अगर हम इंडिविजुअल वर्क देने लगे तो देन द एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस विल हैपन. सम को मॉडल बनाने के लिए बताते हैं, सबको चार्ट बनाने के लिए बताते, किसी किसी को हमने एक्ट करने के लिए, ड्रामा एक स्किट प्रिपेयर करने के लिए बताते. सो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क यू शुड गिव द इंटरेस्टिंग. सबको ऐसे लिख के आओ, सबको एक ही चीज बोले तो दैट विल बी नॉट इंटरेस्टिंग. सम ग्रुप को एक मॉडल बनाओ, या सम ग्रुप को एक चार्ट बनाओ, सम ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन करना है, आप ग्रुप बोले. ऐसे डिफरेंट इंटरेस्टिंग वर्क दिया तो the learning process will be in the good manner. That is the engagement in the learning process. Engage करना है बच्चों को learning process में by different work and constant monitoring of this work. अगर कुछ भी वर्क दिए हमने क्लास में, प्रैक्टिकल में बच्चों को देते हैं, सस्तरों में किसी को इसका मॉडल बनाते, कोई बनाते रहते, वो क्लास में करते रहते. So you have to monitor, otherwise students will
नॉट डू वर्क, बात करते बैठते और दे विल डू अदर थिंग्स, मेन वर्क छोड़ के बाकी सारे चीजें करते बैठते। दैट्स वाई कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट। वो हमने क्या वर्क असाइन दिया वही कर रहे हैं प्रैक्टिकल में और क्लासरूम में, वो रिगार्डिंग दी मॉडल बनाने में ही काम पे है, अदरवाइज दे आर डूइंग अदर थिंग्स। इसके लिए मॉनिटर चाहिए। दैट्स वाई लर्निंग प्रोसेस में एंगेज है बच्चे, ये एंश्योर करना जरूर है। दैट्स वाई दिस इज आल्सो की बिहेवियर इन दी efficient teaching, engagement in the learning process. All of you clear what is this engagement in the learning process? Hello? Yes, sir. Then last key behavior is student success rate. Student success rate का मतलब है अगर students should spend about 60 to 70% of their time on tasks that allow almost complete understanding of the material being taught with only occasional errors. The content should reflect prior learning with easy to grasp steps for the new material. इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे 60-70% ऑफ देयर टाइम, अगर 60-70% टाइम भी वो टास्क हमने क्या क्वेश्चन दिया है, क्या असाइनमेंट दिया है, क्या मटेरियल दिया है, उतना इतना टाइम दिया तो भी उनको पूरा मटेरियल समझ में आना चाहिए। दैट इज द सक्सेस रेट, बिकॉज नो वन विल गिव द 100% टाइम, सर्टन डिस्ट्रैक्शन, सर्टन थिंग्स विल बी देयर। सो हमने मटेरियल और टास्क और एनी असेसमेंट कुछ भी दे रहे, so even students should spend only 60 to 70% of their time on our tasks, then you should be able to understand the whole material being taught with only occasional errors. Some occasional errors हो सकते, लेकिन अगर बच्चे इतना टाइम दिया तो भी, सिर्फ बोलते ना मैंने क्या नोट्स दिया है, सिर्फ 10 मिनट, इतना सिंपल नोट्स भी आप पढ़ाए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाए तो भी चलता है, इतना तो पढ़ना ही जरूरी है आपको, हम बोलते हैं ना क्लास में। दैट इज द थिंग, स्टूडेंट सक्सेस रेट अगर 60-70% ऑफ देयर टाइम if they spend on whatever things material or teaching you have taught, then the student is able to reflect the prior learning and he will able to grasp this test for the new material. So ऐसे मटेरियल ऐसे टीचिंग करना है। वेरी लेस स्टूडेंट्स विल गिव देयर टाइम इन दी 100%। अगर क्लास में आप 1 आवर क्लास ले रहे 100% 1 आवर, दे विल नॉट लिसन। अगर ये पॉसिबल भी नहीं होता है 1 आवर कॉन्स्टेंटली किसी किसी को, देन इवन द स्टूडेंट्स लिसनिंग अराउंड 60 to 70%, 40%, 40 मिनट्स भी और ठीक से ध्यान से सुन रहे, then the student should be able to understand that concept. That is the student success rate. Because कोई कोई बच्चे 100% कंसंट्रेशन दे सकते हैं, कोई कोई बस वेरी लेस नंबर पर स्टूडेंट्स आर देयर, बट इवन दो दे आर गिविंग 60 to 70% of their time, then also they should understand the material being taught. That is the student success rate. ऐसे कंटेंट ऐसे टीचिंग होना चाहिए, दैट इज द की बिहेवियर। बिकॉज नॉट 100 स्टूडेंट विल लिसन 100%, पूरा 1 आवर नहीं सुनते, सो सुनता है 30 to 35 minutes. In 30 to 35 minutes if they are listening, then also they are should able to understand the concept, what has been taught prior and what is going for next new material, that should be understood by the student. That is the स्टूडेंट सक्सेस रेट। ऐसे टीचिंग को हमने इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं, स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस रेट। व्हाई दिस इज दे हैव गिवन 60 to 70% टाइम, because no all students are give the 100% of their time. Even if they are giving more than 50%, 60-70% का मीनिंग क्या है, even more than 50% of their time they are given for class or what are the tasks we are giving, then also they are able to understand that type of material and teaching should be there. That is the concept behind this students success rate. अगर 100% concentration है तो भी 100% समझ में आने वाला है तो no one will understand, because all students are not able to focus 100% टाइम। उधर इधर ध्यान हटता है 5-10 मिनट के लिए, तो उनका माइंड उधर इधर भागता है, बीच में थोड़ा माइंड डाइवर्ट होकर भी फिर से वो क्लास कॉन्सेप्ट के ऊपर आए तो भी उनको समझना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सक्सेस रेट। द स्टूडेंट सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग।
even 60-70% they are giving time or attention, then also the student should able to understand the whatever material you should teaching, that is with occasional errors. Some errors हो सकता है because of their attention उधर इधर divert हुआ रहता है, but major material what subject is teaching in classroom, क्या चल रहा है क्लासरूम में, क्या टीचर टीच करे वो तो पता होना चाहिए. That is the concept of students success rate. So समझ में आ गया, these are the 5 character behaviors or key behaviors. Without these key behaviors the teaching should not become effective. So effective teaching के लिए these are the key behaviors. What are the key behaviors? First one, lesson clarity, instructional variety, teacher task orientation, engagement in the learning process, and student success rate. These 5 key behaviors are the very important. Based on these 5 key behaviors only the effective teaching will happen. अगर क्वेश्चन भी ये these key behaviors के ऊपर ही पूछता है, these 5 key behaviors you have to remember name of this key 5 key behaviors. Then इसके साथ other behaviors आते हैं, helpful behaviors. Whether these are not mandatory or not fundamental. अगर this behavior present है, then they are helpful to more ऐसे effective teaching को help करता है, but these are not mandatory. But key behaviors है ना, those are mandatory and basic one. अगर key behavior के साथ these behaviors are also there, then it is good, more additive, effective होता है. What are the helpful behaviors? Using student ideas and contribution. अगर student का ideas and contribution हम लेके उसको हमने teach करने लगे तो it will be more effective teaching. Teachers should use the mediated dialogues. Be sure to knowledge, modify, apply, compare and summarize the student responses as necessary. अगर student भी कभी-कभी कुछ idea देता है सर ऐसे ऐसे, उनका भी ideas contribution लेके हम teach कर रहे हैं, then it is also effective teaching, but it is a helpful behavior, not a key behavior. Simply student ideas and contribution के ऊपर हम teach नहीं कर सकते. With key behaviors, अगर कोई बच्चा का स्टूडेंट्स का आइडियाज भी लेके हम करें, then it is helpful for the effective teaching. Then structuring. Teacher should reinforce the learned content and place it in the relation to the new content. क्या क्या लर्न किया बच्चे, न्यू कंटेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर, एक कंटेंट को स्ट्रक्चरली हमको ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज द स्ट्रक्चरिंग. अगर स्ट्रक्चरिंग कर रहे, दैट इज द हेल्पफुल बिहेवियर. इफेक्टिव टीचिंग के लिए स्ट्रक्चरिंग भी एक हेल्पफुल बिहेवियर है. देन क्वेश्चनिंग. यूज a variety of question and be sure include questions that require more thinking and problem solving. whether questioning भी करना है बच्चों को बीच बीच में. ऑलरेडी की बिहेवियर में एक कॉन्सेप्ट में हो गए. these are helpful behavior. questioning, use a variety of questions as I already told. क्वेश्चन करना है, प्रॉब्लम थिंक करने के लिए लगाना है बच्चों को. क्वेश्चन ऐसे पूछना है, requires thinking and problem solving type of question हमको पूछना है बच्चों को. This behavior is helpful behavior, not a key behavior. Then probing. क्या है? Draw more out of student responses by getting students to elaborate on their ideas. Probing कर रहे हैं. probing मतलब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स को, अगर बच्चे ने कुछ आंसर दिया, देन हाँ उसके बाद उतना ही आंसर, और क्या कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ पता है आपको, ऐसे प्रोब करते हैं. वी विल ड्रॉ द मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट. सो सिंपली आई विल आस्क क्वेश्चन, द स्टूडेंट विल टेल द आंसर, दैट इन देयर ओनली, दैट विल नॉट स्टॉप. I will further ask the anything you know more about this thing, why this is becomes this. So if I probe the student will give some knowledge what he knows about that ideas, that concept. That is the probing. It helps the student to discover the content rather than being explicitly told. Simply answer करने से अगर हमने probing किया, so we can draw the more answers, more concept from the students. That is the probing. Teacher effect. टीचर effect का मतलब क्या है? It depends on the teacher student relationship. अगर कुछ भी कभी कभी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बोरिंग रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगता है, अगर टीचर एंथुजियाज्म से टीच कर रहे,
उनका वाइज, उनका मूवमेंट, उनका गेस्चरिंग, आई कांटेक्ट के वजह से, उनका टीचर का वजह से कभी कभी सब्जेक्ट और टॉपिक इजी लगता है और लर्नर्स विल लर्न इजीली। दैट इज आल्सो ए इफेक्टिव टीचिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट रहता है रिसर्च का, डाटा एनालिसिस का, वो सब्जेक्ट बोरिंग रहता है। सो अगर टीचर का वजह से, टीचर का लर्नर का वजह से, अगर टीचर एंथुजियास्टिक है, ही इज मोर डिफरेंट डिफरेंट वाइज, मूवमेंट, गेस्चर, आई कांटेक्ट, डिफरेंट मेथोडोलॉजी, एक तरह का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है उनका। सो बेस्ड ऑन टीचर आल्सो द इफेक्टिव टीचिंग विल हैपन्स। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में ये पदार्थ विज्ञान, इनिशियली वी विल फील बोर why this subject is given, because that is not most of students will get difficult। अगर टीच करने वाला टीचर एंथुजियास्टिक है, अगर पदार्थ विज्ञान को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल अगर इंटरेस्टिंग बना रहे हैं दैट सब्जेक्ट को, दैट इज द टीचर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट टीचर यू आर दैट टीचिंग इज इफेक्टिव, दैट सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को लर्नर अच्छी तरह से लर्न कर रहे, दैट इज द टीचर इफेक्ट। सो समझ में आ गए सबको 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स। These are not key behaviors। अगर key behavior के साथ these behaviors are is also there, then the teaching becomes more effective, but these are not mandatory। What are the mandatory? These key behaviors: lesson clarity, instructional variety, teacher task orientation, engagement in the learning process, student success rate। These are the key behaviors। Without these 5 key behaviors, the teaching will not become effective। You may use, may not use these helpful behaviors। अगर helpful behaviors भी है, they may further help the effective teaching। That is the concept। These are the helpful behaviors। What are the? Using student ideas, contributions, structuring, questioning, probing, teacher effect। These are the helpful behavioring। So this makes the teaching as a effective one। Up to this, all of you clear? अगर क्वेश्चन पूछा गया की बिहेवियर्स क्या है टीचिंग इफेक्टिव के लिए, यू हैव टू राइट लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। सो यू हैव टू रिमेंबर these 5 points। Based on this only the number of questions they will ask। We will also solve the multiple choice question based on this concept। So please remember these 5 key behavior। रिपीटेड इसलिए कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना चाहिए, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, engagement in the learning process, student success rate। These are the 5 key behaviors in the effective teaching। समझ में आ गए this key behaviors and helpful behaviors, all of you? hello hello प्लीज रेस्पॉन्स। Yes, sir. ओके, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? टू समराइज, टीचिंग इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, टीचिंग इफेक्टिव है बोल के हम कैसे जज कर सकते हैं, टीचिंग इफेक्टिव करने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करना है, तो व्हाट आर दी की बिहेवियर्स इन दी इफेक्टिव टीचिंग, व्हाट आर दी हेल्पफुल बिहेवियर इन दी इफेक्टिव टीचिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ाई किया है। सो अभी क्या पढ़ाई करने वाला है हम? डिफरेंट अप्रोचेस इन द एजुकेशन। एजुकेशन में डिफरेंट एजुकेशन अप्रोचेस है। ये कैसे है? सिद्धांत, अलग अलग आदमियों ने एजुकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच बताए। कोई कोई के अनुसार अलग अलग उनका सिद्धांत हमने बोलते हैं ना। फॉर एग्जांपल इन आयुर्वेद में आत्मा का बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत बताए। सांख्य लोगों ने अलग बताते, वैशेषिक वाले अलग बताए, दार्शनिक वाले अलग, ऐसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट रहते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग आइडिया, उनका ओपिनियन देते हैं। लाइक दैट डिफरेंट अप्रोचेस इन एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए, व्हाट इज द एजुकेशन। सो एजुकेशन का बारे में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफी है। दैट वन वी आर नाउ डिस्कसिंग। फर्स्ट क्या है? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का सिद्धांत वाले लोग, इज्म मतलब उनका एक सिद्धांत रहते हैं, बिहेवियरिज्म को मानते हैं। बिहेवियरिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियरिज्म, इस लोगों ने एजुकेशन का अप्रोच और एजुकेशन को कैसे मानते, मतलब
This approach assumes that the learner is a passive who can make to learn new behavior with the help of condition. Therefore, learning can be explained by change in behavior that can be observed. इनका कहना क्या है? Learning is nothing but, लर्निंग का मतलब क्या है? चेंज इन दी बिहेवियर. लर्निंग करने के बाद, कुछ तो कुछ करने के बाद, लर्न होने के बाद आपका इन दी एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर चेंज होता है. सो दैट इज द बिहेवियरिज्म. उनका कहना क्या है? लर्निंग अल्टीमेटली लीड्स टू द चेंज इन द बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. हम वो बिहेवियर को देख सकते हैं. एग्जाम्पल, ये थॉर्नडिक्स लॉ ने हमने पढ़ाई किया था. इट कम्स अंडर द बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ रेडीनेस. So when a person is ready to act or learn, he learns more effectively with greater satisfaction. अगर पर्सन को रेडीनेस है, ये सीखने के लिए उनको रेडी है, लर्न करने के लिए रेडी है, उनका बिहेवियर है वो, सो ही विल लर्न मोर इफेक्टिवली एंड विथ ग्रेटर satisfaction. So based on behaviorism, this law tells that based on behaviorism, इन लोगों का थॉट क्या है? सो लर्निंग इज बिहेवियर का ऊपर डिपेंड है. सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज बिहेवियरिज्म. इनका थॉट क्या है? बिहेवियर का ऊपर ही लर्निंग होता है. सो बिहेवियर रेडी टू, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट comes under the based on the this behaviorism only. Behaviorism का मतलब क्या है? Whatever you learn, it will bring the certain changes in the your behavior that should be observable. आपको ऑब्जर्व कर सकते that change in the behavior. That is the learning. That is the education. उनका मतलब कहने के क्या है? एजुकेशन से आपका बिहेवियर कुछ तो कुछ चेंज होता है. लर्निंग और एजुकेशन इन द सेंस, लर्निंग होने के बाद ही आपको एजुकेशन कह सकते हैं ना. सो एजुकेशन किसी की तरह से आपका बिहेवियर को चेंज करता है. उनका थॉट है, बिहेवियरिज्म वाले को थॉट है, बिहेवियर चेंज होता है. उसके अंदर ही दिस लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? अगर आप रिपीटेडली रेस्पॉन्स कर रहे हैं, रिपीटेडली स्टिमुलस और स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. स्टिमुलस शुड एबल टू जनरेट द रेस्पॉन्स. द लर्निंग मेथड्स, टीचिंग लर्निंग मेथड में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलरेडी स्टडी किया है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. अगर आप बार बार रेस्पॉन्स दे रहे स्टिमुलस को, देन इट विल स्ट्रेंथन्स द लर्निंग. अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज और रिपीटिंग नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, देन इट विल वीकन द बॉन्ड बिटवीन weakens the learning, that is situation and response. That is the law of exercise. Repeated practicing will use the more learning behavior, और learning होता है. अगर repetition नहीं कर रहे, then that will not lead to the weak learning. That is the, it will not strengthen the learning. That is the meaning of this law of exercise. वो उनका भाषा में बताए. Repeating a response would be strengthen the bond between stimulus and response. बार बार आप response देने लगे stimulus को, then it will strengthens the bond between stimulus and response. अगर आप exercise को response को नहीं दे रहे stimulus को, then it will weakens the that bond between the response and the stimuli and response. That is the law of exercise. And then law of effect. What is this? It is the principle of reinforcement and punishment. Any behavior followed by the pleasure would strengthen that behavior, and any behavior followed by pain would be decrease that behavior. इसका मतलब क्या है? अगर मेरा कुछ बिहेवियर की वजह से मुझे आनंद मिल रहा है, then that behavior will strengthen the फर्दर strengthens the that behavior. अगर पर्टिकुलर बिहेवियर से मुझे पेन हो रहा है, दुख मिल रहा है, then that would decreases the that behavior. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को हेल्प किया और कोई बिहेवियर और कुछ लर्निंग की वजह से मुझे प्लेजर मिल रहा है, देन दैट बिहेवियर को हम स्ट्रेंथन करवाते हैं. अगर कोई लर्निंग और बिहेवियर की वजह से हमने, इधर बिहेवियर का मतलब ये लर्निंग भी आप ध्यान में रखना है, बिकॉज बिहेवियरिज्म का थॉट ये है लर्निंग शुड बी चेंज इन द बिहेवियर. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड बिहेवियर. अगर कुछ बिहेवियर की वजह से मुझे पेन प्रोड्यूस हो रहा है, पेन सफर कर रहे हैं, दैट बाय लर्निंग दैट बिहेवियर, सो वी विल डिक्रीज दैट बिहेवियर. एग्जांपल देना है तो आपको देखो, अगर आपका पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से आपको फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, आपको समाज में कुछ आपको वैल्यू हो रहा है, देन वी विल स्ट्रेंथन दैट बिहेवियर. और एनी बिहेवियर दैट विल गिविंग पेन, आपको बदनाम कर रहे हैं और आपका नाम खराब हो रहा है और आपको पेन हो रहा है, दैट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ
बिहेवियर, आपका बिहेवियर की वजह से, देन यू विल डिक्रीज दी दैट बिहेवियर। नहीं नहीं, मुझे ऐसे बिहेवियर नहीं करना है, बिकॉज इट विल decreasing my name and it will giving the pain. That is the concept, nothing but law of effect. effect के हिसाब से हमने behavior का strength and weakness, strength बढ़ाते and decrease करते, that is the concept. कोई भी behavior के वजह से मुझे pleasure मिल रहा है, then that will should be strengthened. अगर कोई बिहेवियर की वजह से मुझे पेन हो रहा है, देन आई विल डिक्रीज दैट बिहेवियर, दैट इज द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इफेक्ट. सो बिहेवियरिज्म का सिद्धांत के ऊपर क्या है, एवरी लर्निंग इज विल लीड्स टू द चेंज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म का मतलब इनका मानना है कुछ भी सीखो आप, कुछ भी एजुकेशन दे दो, लर्निंग होता है ना वो वन और द अदर वे द बिहेवियर विल चेंज, दैट स्पेशली इन द कंडीशन रिस्पॉन्स. कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में दैट रिस्पॉन्स होता है, दैट इज द चेंज ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को बड़े कोई एल्डर्स आए तो नमस्कार करने के लिए एक एजुकेशन दिया, देन इवन दो वो लोग ग्रोन होके बड़े होने के बाद भी दैट बिहेवियर विल बी कंटिन्यूड. बड़े होने के बाद भी वो एल्डर्स कुछ आया तो उनको रेस्पेक्ट देता है और नमस्कार करते हैं, दैट टाइप ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर विल हैपन्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म. इन लोगों का मानना है लर्निंग इज द अल्टीमेटली चेंज ऑफ द बिहेवियर, दैट इज कंडीशन रेस्पॉन्स को condition response. You have to just remember condition response. We already learned it also in previous classes, conditional response and operational response. What is the conditional response and what is the operational response? Also we learned in the previous classes. Please revise what are the that thing, conditional and operation response. So here response or behavior change in respect to conditional response वो बोल रहा है. behaviorism का मतलब क्या है, समझ में आ गया. दिस स्कूल ऑफ थॉट क्या मानता है एजुकेशन और लर्निंग को, बिहेवियरिज्म वाला क्या मानता है, लर्निंग और एजुकेशन अल्टीमेटली ब्रिंग्स द चेंज इन द बिहेवियर. अगर वो बिहेवियर से आपको प्लेजर मिल रहा है, वी विल स्ट्रेंथन द बिहेवियर. अगर पेन हो रहा है, सो वी विल डिक्रीज द दैट बिहेवियर. दैट इज द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गए बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ यू? हेलो, एनी डाउट? अगर कुछ डाउट है तो आई विल रिपीट. बिहेवियरिज्म क्या है, ये अप्रोच क्या है एजुकेशन का बारे में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत थ्योरी उनका अप्रोच दिया है. बिहेवियरिज्म वाले क्या मानता है, एजुकेशन और लर्निंग इज एक्सप्लेन्ड बाय चेंजेस इन द बिहेवियर. इनका मानना क्या है, लर्निंग और एजुकेशन की वजह से बिहेवियर चेंज होता है, दैट इज द अल्टीमेट. उनका कहना क्या है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द चेंज इन द बिहेवियर, दैट इज द बिहेवियरिज्म. इज्म मतलब उनका एक सिद्धांत, वो उनका ही सुपीरियर मानता है, दूसरों का नहीं लेते हैं. हमारे हिसाब से हमको ये करेक्ट लगता है. एजुकेशन इज नथिंग बट बिहेवियरिज्म, चेंज इन द बिहेवियर. लर्निंग इज नथिंग बट बिहेवियर चेंज. दैट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन दिस पीपल विल गिव, दैट इज द दिस बिहेवियरिज्म आइडिया और अप्रोच, बिहेवियरिज्म अप्रोच. इस पे दिस थॉर्नडिक्स भी क्या लॉ दिया ना, थॉर्नडिक्स लॉज ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ाई किया, लॉज ऑफ थॉर्नडिक्स में these three laws will fit in this behaviorism में fit होता है. That's why we are repeating that law of learning, three law of readiness, law of exercise, law of effect को this behaviorism के अंडर क्यों फिर से पढ़ाई कर रहे हैं. These three law will suit under the behaviorism concept. That's why we are giving this Thorndike's law को again once again here discuss करने का जरूरत क्या है. These are related to the behavior. That's why we are once again repeating the law of this Thorndike का 3 लॉ क्या है, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इस पे बिहेवियरिज्म के अंडर स्टडी कर रहे हैं फिर से. एक्चुअली वी लर्न दीज थिंग्स इन दी लर्निंग लॉज में पढ़ाई, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में पढ़ाई किया. थॉर्नडिक्स ने बहुत सारे लॉज दिए हैं, उसमें ये 3 लॉज भी है. दिस 3 लॉज सूट होता है दिस बिहेवियरिज्म आइडियाज में. सो बिहेवियरिज्म के आंसर क्या है, देखो, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. कुछ भी लर्निंग करते हैं ना, उससे हमको बिहेवियर चेंज होता है. दिस इज बिहेवियर बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी. हमने कैसे लर्निंग करते हैं, अगर एनिमल कुछ लर्न कर रहे थ्रू एसोसिएशन, फूड को दिखाते एंड एक बॉल को दिखाते. सो कंडीशनल बिहेवियर एंड ऑपरेशनल बिहेवियर वी ऑलरेडी learn. This the same picture represent the same thing.
दो चीज के लिए बॉल एंड दिस बोन को कंडीशनिंग कर रहे हैं हम. सो द डॉग विल salive the by seeing the bone. If after sometimes if you hidden the bone, if you simply shown the ball also, the dog will start the saliving because these both are get associated, ball and bone are get associated. Then the dog will think that if even though we are showing ball, it will think about bone. That is the लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. तो चेंज ऑफ बिहेवियर क्या हो रहा है, डॉग का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना अल्टीमेटली. पहले डॉग बोन को दिखाए तो ही सलाइवेट करता था, बाद में हमने बोन एंड बॉल को एसोसिएट करके उसको टीच किया. द डॉग विल चेंज इट्स बिहेवियर इवन दो द पर्सन इज शोइंग बॉल, इट गेट्स द सलाइवेटिंग. दैट इज द चेंज इन द बिहेवियर. दिस टाइप ऑफ, इसमें क्या कहते हैं, कंडीशनिंग. एंड अनदर में क्या है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. ये ऑपरेटिव कंडीशनिंग बोलते हैं ना. अगर बच्चे ने कुछ ऐसे गलत किया, हमने पनिशमेंट दिया. अगर बच्चे ने ऐसे सिस्टमेटिक रख दिया, ऐसे अच्छे काम किया, अगर हमने उसको रिवॉर्ड दिया, देन आल्सो द बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है. दैट इज द ऑपरेशनल कंडीशन. सो बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, चेंज इन द बिहेवियर. लर्निंग इज और एजुकेशन इज नथिंग बट चेंज इन द बिहेवियर. दैट इज द कॉन्सेप्ट. अभी आपको क्लियर हो गया क्या है बिहेवियरिज्म का मतलब, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Then गेस्टलॉट साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस वोल्फंग कोहलर क्या है इनका, अकॉर्डिंग टू इनका अप्रोच क्या है एजुकेशन का. बिलीफ इन दिस साइकोलॉजी इज दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. गेस्टलॉट साइकोलॉजी एम्फसाइज द परसेप्शन. Gestalt's theory states that complex learning occurs as a result of insight. इनका मतलब क्या है, ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत लिया है हमने एजुकेशन में. साइकोलॉजी इटसेल्फ इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट. हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट ले रहे हैं, सो इसलिए आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. मुझे भी लगता है, आपको नहीं. सो हमको इतना समझ में लेना है. अकॉर्डिंग टू दिस गेस्टलॉट साइकोलॉजी के अनुसार एजुकेशन और लर्निंग क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. अगर इसके अनुसार क्या है, मेरा शरीर में किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, दीज आर द पार्ट्स. बट अगर इस सारे पार्ट्स मिलके एक शरीर बन रहे हैं ना, दैट होल इज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट्स. इन लोग क्या बिलीव करता है, अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. अगर अब लिवर भी इंपॉर्टेंट है, किडनी भी इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन, हार्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. अगर पार्ट्स के हिसाब से देखने लगे तो that is not greater, that is not important. When these all parts will come together as a whole body is there, then only it is greater than the sum of its part. It believes the this concept. समझ में आ गया आपको this sentence का, whole is greater than the sum of its parts. समझ में आ गया इसका इनका कहना क्या है, ग्रेटर होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. आई विल शो द नेक्स्ट इमेज, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. जस्ट आई हैव गिवन एग्जांपल, द बॉडी का एग्जांपल दिया है. अगर मुझे हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, अगर पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और सब पार्ट्स एक जगह में आके या जो होल शरीर इंपॉर्टेंट है, विच वन इज ग्रेटर? इंडिविजुअल आल्सो वी नीड, बट अगर विच वन इज ग्रेटर बोले तो एज ए इंटीग्रेटेड होल ऑर्गन्स एंड एक्सट्रीमिटीज होके बॉडी एज ए होल इज ग्रेटर देन दी इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स. दैट इज द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गए इनका, बेस्ड ऑन दिस साइकोलॉजी द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. आई विल शो द इमेज, देन यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी. देन गेस्टलॉट साइकोलॉजी एम्फसाइज द परसेप्शन. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेप्शन को मानता है. गेस्टलॉट theory स्टेट दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग occurs as a result of insight. इनका कहना क्या है, अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स थिंग्स को लर्न कर रहे हैं because of teaching, because of other things you are not understanding, because of your insight. अगर आपको insight है माइंड में, आपका दिमाग है, insight कर सकते कोई भी थिंग की वजह से, then only it is possible to learn the complex learning. अगर insight नहीं है आपका, आपके अंदर insight नहीं है that particular subject, then you are not able to learn the complex learning. इनका
कहने का मतलब यही है, इंसाइट होना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को लर्न करने के लिए। द पर्सन शुड हैव द इंसाइट ऑन दैट सब्जेक्ट, देन ओनली द कॉम्प्लेक्स थिंग्स विल बी लर्न। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन का, ये साइकिल है या साइकिल एज ए होल इज, these are the parts of cycle, रिम है, चैन है, सो these are the parts। ये गेस्लाट थ्योरी क्या कहता है, होल इज ग्रेटर देन दी इट्स पार्ट्स। आपको क्या अच्छा लगता है, दिस पार्ट्स इज ग्रेटर और एज ए होल साइकिल इज ग्रेट? कौन सा यूजफुल है, ये पार्ट्स यूजफुल है ऐसे अलग अलग, और एक असेंबल करने के बाद ये एज ए होल इंपॉर्टेंट लगता है आपको? विच वन इज यूजफुल लगता है आपको? हेलो, 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 आर यू Yes, एबल sir. टू सी Yes, दिस sir. इमेज? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इधर Yes, साइकिल है, sir. इधर साइकिल का पार्ट्स है। ये गेस्लाट थ्योरी का मतलब क्या है, बिलीफ इन दिस साइकोलॉजी इज दैट होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। The whole मतलब here cycle, cycle whole is greater than its parts. Its parts say the whole, when it comes with whole parts, then the things is greater. That is the concept. The whole is greater than its part. अलग अलग chain है, handle है, rim है, wheel है, then अलग अलग parts रहते हैं ना, तब it is not useful. When all these parts come together as a whole, then it is great, it is useful. That is the Gestalt psychology. समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. हाँ। सो लाइक दैट आवर बॉडी पार्ट आल्सो, इनका थॉट क्या है, हमने बात करते हैं लिवर इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे चीजें इंटीग्रेटेड होके होल बॉडी है ना, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं गेस्लाट ने, उनका कॉन्सेप्ट ये है, पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट्स एज ए होल, अल्टीमेट होल, सारे पार्ट्स मिलके एक थिंग बनाते ना, वो सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, अगर रोग निदान में रोग का परीक्षा करना करते, फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स स्टडी करते, पैथोलॉजी में पैथोलॉजी का पैरामीटर्स सिखाए आप स्टडी करते, और इंटर्नशिप में आने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्लिनिकल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एज ए पार्ट, अलग अलग पार्ट you have studied about the disease and treatment, then डॉक्टर होने के बाद ये सारे सब्जेक्ट को आप अप्लाई करके एज ए होल वी विल ट्रीट। अगर एनाटॉमी का भी नॉलेज लेते, फिजियोलॉजी का भी लेते, पैथोलॉजी का भी लेते, क्लिनिकल गायनाकोलॉजी का भी लेते, सो दिस पार्ट्स को यूज करके एज ए होल वी विल मेक द वन कॉन्सेप्ट एंड वी विल ट्रीट। वही करते हैं ना हमने मेडिकल साइंस में भी, क्या एकदम एक ही बार ट्रीटमेंट सीखते हैं हम? नहीं, पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं हम। अगर आपको अनाटॉमी इतना ही पता है, अगर ट्रीटमेंट करने को नहीं होता है एज ए होल, देन इट इज नॉट ग्रेट। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, दीज आर पार्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर ये सारे पार्ट्स को मिलके एक ट्रीटमेंट बनाए, आप ट्रीटमेंट दिया है एज ए होल ऑफ यूटिलाइजिंग दीज पार्ट्स, देन दैट इज द ग्रेटर, दैट इज द यूजफुल। अगर ये सारे पार्ट्स को आप इंटीग्रेट और मिक्स करके एक ट्रीटमेंट करने को नहीं हो रहा है आपका हाथ से, देन इट इज यूजलेस। अगर अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ाई करके यूजलेस होता है आपको, ये दिस पार्ट्स को आपने ऐसा इंटीग्रेट करके एक आइडिया और नॉलेज तैयार करना है। बाय दैट नॉलेज और दैट आइडिया यू हैव टू एबल टू ट्रीट द पेशेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट, द होल इज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट्स। समझ में आ गया अभी आपको, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Then Gestalt psychology, this image, based on this image you can also understood this Gestalt psychology। देखो पार्ट्स है ये सारे, ये दिस इज ए होल, ये अलग अलग पार्ट्स है, इसके अंदर क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स है। सो द होल इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स। देखो इसमें ये है, ये बट होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स। सो सारे मिलके ही एक होल होते हैं ना, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्ट्स। द व्हील इज नॉट ए साइकिल, so wheel is not a cycle, it is, cycle is different from its parts, that is the concept।
इसका मतलब क्या है, हम चीजों को पार्ट्स पार्ट्स देखने से, अलग अलग देखने से हमको कुछ यूज नहीं है। सारे पार्ट्स, सारे नॉलेज को, सारे कॉन्सेप्ट को हम एक इकट्ठा करके हमको उसको यूज करना है। दैट इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस साइकोलॉजी। हमको अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट का पार्ट पार्ट नॉलेज हमने एक, अगर कुछ वुंड हो गया, मल्टीपल इंजरी हो गया, सो उधर हमने बोन का अनाटॉमी भी यूज करना है, उधर वेन का भी करना है। अगर हमारा सर्जिकल सूचर, इधर कौन सा सूचर हमको डालना है, अगर वेन्स कट हो गए, वेन्स के लिए कौन सा टाइप ऑफ सूचर मटेरियल यूज करना है, कौन सा नंबर थ्रेड यूज करना है, कौन सा नीडल, इधर कट एड्स, राउंड एड्स, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, इधर बोन फ्रैक्चर हो गए, बोन फ्रैक्चर है तो क्या करना है। ऐसे अलग अलग हमने स्टडी करके दैट पार्ट ऑफ नॉलेज को हमने एक टाइम इकट्ठा करके हमने उसको यूज करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। पार्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स होल थिंग। सो आपको बीएमएस करने के बाद ही हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता चलता है। वही सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाई करने के टाइम आपको उसका इंपॉर्टेंस, हमने क्यों पढ़ाई कर रही है, आपको पता नहीं चलती। एज ए होल, व्हेन यू फिनिश योर कोर्स, then as a whole you will collect all the knowledge from all the subject as a part one, then you are able to treat the patient. That is the concept. Whole is different from the parts, and whole is greater than or useful than the its parts. That is the concept of Kesslot psychology. Then constructivism, according to this theory, education or learning is the theory states that learner constructs knowledge. In this theory is learner central. इस पे क्या है, लर्नर्स ओनली कंस्ट्रक्ट इन देयर नॉलेज। इसके ये लोग क्या बताते हैं, लर्नर का कैपेसिटी की वजह से ही विल कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। इट इज नॉट बाय टीचर। टीचर सिंपली नॉलेज देता है, लेकिन कंस्ट्रक्ट कौन करता है, द लर्नर। लर्नर इज सेंट्रल। अगर लर्नर के पास वो एबिलिटी नहीं है, देन ही विल नॉट कंस्ट्रक्ट द knowledge. That's why learner is important. That's why these people tells that constructivism, this theory tests that learners construct the knowledge. Learner का capacity है, learner is central, he is able to construct the knowledge. ये theory को कौन बताए, जीन पैजेट एंड ब्रूनर। जेएस ब्रूनर्स आर द मेन थिंकर्स ऑफ दिस theory. इनके आंसर क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म रहता है हर एक आदमी के अंदर। he will build the construct the knowledge. They believed that each individual actively construct the knowledge for itself. अगर सब बच्चों को हमने टीच करता है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग लर्नर उनका नॉलेज उनका इंडिविजुअल लेवल पे कंस्ट्रक्ट करता है। अगर कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सो दैट इज नॉट हेल्पफुल। इनका कहना क्या है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है, लर्नर का कैपेसिटी। अगर लर्नर के पास कंस्ट्रक्ट करने का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का एबिलिटी नहीं है, देन एजुकेशन विल नॉट हैपन्स। एजुकेशन और लर्निंग का अल्टीमेट एम है, इट डिपेंड्स ऑन लर्नर। लर्नर का ये एबिलिटी है। दिस थ्योरी टेल्स दैट इट इज द लर्नर सेंट्रल, देन ईच इंडिविजुअल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज फॉर इटसेल्फ। हर एक आदमी उनका नॉलेज को खुद से खुद कंस्ट्रक्ट करता है फॉर हिमसेल्फ। नो वन विल कंस्ट्रक्ट द नॉलेज फॉर हिमसेल्फ। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी वही आदमी होता है, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना नॉलेज के लिए। दैट इज द कंस्ट्रक्टिविज्म। एज पर जेन पेजेट, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन आर द बेसिस ऑफ लर्निंग। ये जेन पेजेट ने क्या करता है, एक थ्योरी बताता है लर्निंग कैसे होता है हमारा, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सब्जेक्ट को स्टडी किया, कुछ नया सब्जेक्ट, कुछ को नया कॉन्सेप्ट उसका बारे में मैंने आज पढ़ाई किया, देन आई विल अकोमोडेट एंड असिमिलेट दैट नॉलेज विथ द प्रीवियसली नोन कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल देना है तो, अगर हमने एक बेंच में 4-5 लोग फ्रेंड्स बैठे हुए रहते हैं, कोई नया हमारा फ्रेंड आ गया, सो उनको हमारा बीच में बिठा के उनको असिमिलेट एंड अकोमोडेट कर देते हैं। हम 6 लोग अकोमोडेट कर देते हैं, उनको थोड़ा एडजस्ट करके हम असिमिलेट करके अकोमोडेट कर लेते हैं वो बेंच में। सो दैट इज द असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। लाइक दैट, एनी न्यू कॉन्सेप्ट, एनी न्यू सब्जेक्ट, एनी न्यू थिंग इफ यू लर्न, it will happens because of assimilation and accommodation. These things will happen in the learning process. The learning is based on an assimilation and accommodation के वजह से learning होता है। जीन पिजर्ट ने ये बताता है assimilation and accommodation होता है
then only it will leads to the learning. इनका कहना क्या है, assimilation, accommodation are important for are basis for the learning. So that is the concept of constructivism. समझ में आ गया आपको what is constructivism? इनका कहना क्या है, हर एक इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, लर्नर सेंटर. इनका कहना क्या है, इंडिविजुअल का कैपेसिटी होता है कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ. अगर टीचर कितना भी टीचिंग करो, अगर लर्नर के ऊपर डिपेंड है, ये बताते ये लोग. एंड अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन आर द बेसिस फॉर लर्निंग. सो दिस आर द, सो देखो ये क्या बताए, लर्नर ही इज अ लर्नर. Based on his capacity, he will construct his own knowledge. So he will learn and he will construct his knowledge. It is individual capacity constructivism ये कहते हैं. And assimilation and accommodation मतलब already आप बहुत सारे चीज पढ़ाई किया रहते हैं और नया चीज भी आप स्टडी करते, then you will assimilate that concept knowledge in the already present knowledge के साथ assimilate करते हैं and accommodation करते हैं, then finally the learning will happens. That is the concept of assimilation and accommodation. समझ में आ गए? Based on these pictures, what is the constructivism and assimilation and accommodation? Hello? Yes, sir. Okay. This, see this image, second image, black one. You will understand the assimilation and accommodation. आप already science का बारे में कुछ, chemistry का बारे में पता है. अगर कुछ नया subject आप सीख लिया, so you will assimilate and fit in the this in between the two interrelated concept. So that is the assimilation and accommodation. The learning will happens by assimilation and accommodation. ये जीन पेजार्ट ने ये कहता है. Then constructivism, overall constructivism का सिद्धांत क्या है? Learner is responsible. Learner construct his own knowledge. Based on his constructivity, they will gain the knowledge. That is the concept of constructivism. Then idealism. These are philosophical things. Idealism वाला क्या कहता है? This approach emphasizes the spiritual aspect of the learning process. It is believed in idealism that God is source of all knowledge and creation. Values are absolute, eternal and unchanging. Idealism लोग क्या बोलते हैं? इनका मत से क्या है? Knowledge क्या है? भगवान का, भगवान इज, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, देने वाला वो है. नॉलेज इज सोर्स ऑफ गॉड. दिस पीपल बिलीव द आइडियालिज्म. आइडियालिज्म लोगों को गॉड को बिलीव करता है. द नॉलेज इज सोर्स, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड क्रिएशन. गॉड का, गॉड अगर हमको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, वी विल गेट द नॉलेज, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द नॉलेज. ये इनका सिद्धांत है. ये हम मानना नहीं मानना हमारा हाथ में नहीं है. बट आइडियालजिज्म वाले उनका थ्योरी, उनका मानना क्या है? ये सारे चीजें झूठ है. द सोर्स ऑफ नॉलेज इज गॉड, गॉड इज द अल्टीमेट. वैल्यूज आर ऑब्सोलेट. एंड दीज लोग बोलते हैं वैल्यूज है ना, ये मॉरल, सत्य बोलना, अहिंसा करना, ये सारे वैल्यूज है ना, ये दीज आर ऑब्सोल्यूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग. हमने बोलते हैं ना, दिस आयुर्वेद पुण्यम भूत शाश्वतो. So like that, these are idealism. These are values are absolute, eternal and unchanging. Ideas are permanent. आपका विचार, आपका आइडिया है ना, these are permanent. अगर व्यक्ति है नहीं है, उनका ideas are permanent होता है. उनका सिद्धांत, उनका विचारधारा are permanent. Ideologists believe that the mind or spirit is essentially real. Mind and आत्मा और मन का reality मानता है. These things should be the रियल सोर्स ऑफ नॉलेज. अगर माइंड एंड स्पिरिट नहीं है, सो नॉलेज नहीं होता है. इनका मत का प्रकार क्या क्या है? गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग, आइडियाज आर परमानेंट. आइडियलिस्ट बिलीव दैट द माइंड और स्पिरिट इज एसेंशियली रियल फॉर गेनिंग द नॉलेज. द मेन थिंकर्स ऑफ दिस आइडियलिज्म आर टोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो एंड स्वामी विवेकानंद आर the thinkers of idealism. इनके आंसर क्या है? values are absolute, eternal and unchanging and ideas are permanent. अगर आप हो, आप नहीं हो, उनका आइडिया, सिद्धांत, उनका विचारधारा परमानेंट रहता है इनके अनुसार, आइडियालिज्म के अनुसार. एजुकेशन का कॉन्सेप्ट में बताए, एजुकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट में ये सारे चीजें आता है. एजुकेशन क्या है? आइडियालिज्म का अनुसार वैल्यूज है.
वैल्यूज आर द रियल एजुकेशन। इनका कहना क्या है, वैल्यूज आर द रियल एजुकेशन। अगर एजुकेशन में वैल्यूज नहीं है सो दैट इज नॉट ए एजुकेशन। अल्टीमेटली इनका कहना क्या है, वैल्यूज आर अब्सोल्यूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग। आप कितना भी एजुकेशन करो, डिग्री करो, पीएचडी करो, अगर वैल्यूज नहीं है दैट एजुकेशन में, देन दैट इज नॉट एजुकेशन। सो एजुकेशन बोलना है देन इट शुड हैव वैल्यूज, it have ideas. So it is, and this this theory of philosophers believes that God is the source of all knowledge. So कौन है नाम, स्वामी विवेकानंद एंड अरविंदो का नाम आप याद रखो. These are Indian thinkers, so who supports this idealism. Next, naturalism क्या कहता है, this approach consider nature as a whole of reality. Nature is the source of all knowledge. इन दिस मत के अनुसार क्या है, भगवान को नहीं मानते ये लोग, नॉलेज इसलिए मिल रहे हैं हमको, द नेचर, प्रकृति इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. सब नॉलेज प्रकृति में है. सो माइंड इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ नेचर. प्रकृति का एक सबऑर्डिनेट है मनस. सो इसलिए हमको ये सारे नॉलेज एजुकेशन मिल रहे हैं. सो दैट्स व्हाई एजुकेशन क्या है, शुड बी सेट इन द नेचुरल सराउंडिंग. एजुकेशन नेचुरल सेटिंग में होना चाहिए. सो मेथड ऑफ टीचिंग और एजुकेशन है ना, ये नेचर के बीच में होना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच में होना चाहिए, बिकॉज नेचर इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज. नेचर का बीच में ही हमारा एजुकेशन होना चाहिए, दैट इज द रियल एजुकेशन. इनका कहना क्या है, अगर नेचर के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, विथ नेचर, विदाउट नेचर इफ यू आर गिविंग एनी एजुकेशन, दैट इज नॉट एजुकेशन. एक्चुअली नेचर के साथ जाना है हमको. Nature is a real source of knowledge. If you go to the nature, then you will know a lot of knowledge. So इनका कहना है कि nature is the ultimate. Naturalist deny the supremacy of God. ये लोग God को नहीं मानता है, nature को मानता है. The immortality of souls and freedom of will. Immortality, soul, freedom of will को नहीं मानते. They naturalists deny the supremacy of God, immortality, soul, फ्रीडम ऑफ विल. इस चीजों को वो लोग नेचुरलिज्म वाले नहीं मानते हैं. अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, लॉज ऑफ नेचर्स आर अनचेंजेबल. प्रकृति का नियम अनचेंजेबल है. प्रकृति का नियम कोई भी चेंज नहीं कर सकते. प्रकृति खुद का खुद कंट्रोल करता है, उसका नियम अलग है. प्रकृति का रूल्स आर अनचेंजेबल. इनका मतलब क्या है, नेचर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. एंड अगर आपको एजुकेशन दे रहे हो प्रकृति का बीच में, नेचुरल सराउंडिंग्स में हुआ तो ही दैट इज यूजफुल अकॉर्डिंग टू दिस पीपल. देन प्रैग्मेटिज्म का मत के अनुसार क्या है, इट फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग. प्रैग्मेटिज्म वाला क्या कहते हैं, वो गॉड को भी नहीं मानते हैं यार, नेचर को भी नहीं मानते. अगर आप एक्टिविटी के ऊपर वो लोग मानते हैं. अगर एजुकेशन लर्निंग होना है तो आपको एक्टिविटी करना है, डूइंग करना है, कुछ वर्क करना है, then only we will learn or we will get educated. According to pragmatics, there are no absolute values for life. Life के लिए ऐसे values, absolute values नहीं है. According to pragmatics, truth is created in the process of experience rather than the preconceived notions. ये आप सिमिलरिटी ले सकते हैं ना, ये हमारा अलग अलग सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत. वो ये है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई कोई भक्ति का मार्ग बताए, कोई कोई कर्म का मार्ग बताए. आपको अगर मोक्ष जाना है, कर्म करना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं. इस पे प्रैग्मेटिज्म वाले क्या कहता है, the knowledge, truth is created in the process of experience rather than the preconceived notions. ये नॉलेज और ट्रुथ हमको कब क्रिएट होता है, कब मिलता है, वी शुड डू द वर्क. इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग और एक्सपीरियंस द ट्रुथ इज क्रिएटेड और नॉलेज इज क्रिएट. अदरवाइज नॉलेज नेचर में भगवान कहते हैं सारे कुछ हम नहीं मानते हैं. द नॉलेज और ट्रुथ विल जनरेट ओनली इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस और वर्क. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ this pragmatism. These people believe in the activity or doing. कुछ काम करो, कुछ वर्क करो, then you will get the knowledge or something new truth. That is the concept of pragmatism. This is the image. They believe that do work, some activity or work, then why you will come to know the why, then you will flash the knowledge or truth. Oh, why this is like this. So
In the process of working, you will know the truth or you will get the knowledge. This is the concept of pragmatism. Without work or exercise or work, you should not get the knowledge, or you should don't know the truth. Truth only creates when there is a work, or in the when we are doing this something. That is the concept of pragmatism. देन ह्यूमैनिज्म वाले का मतलब क्या है, कौन सा भी एजुकेशन करो, कुछ भी लर्न करो आप, ह्यूमैनिज्म theory believes in the welfare and interest of all human beings. It stresses the self actualization. आप कुछ भी करो, ह्यूमैनिज्म क्या बोलते हैं, ऑल द ह्यूमन शुड बी, आपका मानवता क्या बोलते हैं, मानवतावाद बोलते हैं ना, ह्यूमंस को बेनिफिट होना चाहिए. कोई भी एजुकेशन अगर ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, सो दैट इज नॉट एजुकेशन, दैट इज नॉट लर्निंग. सो ह्यूमैनिज्म होना चाहिए कोई भी लर्निंग और एजुकेशन के पीछे. अगर ह्यूमैनिज्म नहीं है, सो दैट इज नॉट ए रियल एजुकेशन और लर्निंग. इनका कहना क्या है, कुछ भी लर्न करो, कुछ भी एजुकेशन दे दो, बट ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस होना चाहिए. अगर ह्यूमंस को हार्म हो रहा है दैट पर्टिकुलर एजुकेशन और लर्निंग से, देन इट इज नॉट ए education. Ultimately, education should be lead to the humanism. That is the concept of humanism. Then realism or rationalism, इन लोगों का क्या रहता है, this approach stresses reason and knowledge. The supporter of this theory states that all our concept and knowledge come from our experience. जॉन लॉक एंड फ्रांसिस बेकन ने ये सिद्धांत को प्रपोज किया है. कुछ नॉलेज एंड रीजन हमको इसलिए आता है, इफ यू डू सम वर्क और इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, देन ओनली नॉलेज हमको मिलता है. एंड वी आल्सो गेट द नॉलेज फ्रॉम रैशनली. व्हाई आई शुड डू थिंग्स लाइक दिस, इसका पर्टिकुलर ऐसे करने के लिए एक रीजन रहता है, रैशनली रहते हैं. यानी वर्क आप कर रहे, दैट वर्क का पीछे एक रीजन रहता है, पर ए रैशनली रहते हैं. व्हाई शुड आई गिव दी इंजेक्शन इन द 90 डिग्री एंगल ओनली, इसका पीछे एक रैशनल रहता है, व्हाई 90 डिग्री में देना है, व्हाई दिस पार्ट में देना है, बिकॉज दैट पार्ट कंटेन लेस नर्व्स एंड ब्लड वेसल, दैट्स व्हाई आई विल गिव द इंजेक्शन इन द दैट प्लेस ओनली. सो कोई भी एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए बिहाइंड एक रैशनल रहता है. इसके लिए why should I select that vein only, why should I select that drug only. कोई भी नॉलेज और एक्सपीरियंस के पीछे ये लोग रैशनलिज्म और रियलिज्म, रैशनल मतलब एक रैशनल इनके लिए चाहिए, क्यों करना है ऐसे, ये इनको रैशनलिज्म बोलते हैं. रैशनलिटी देना है, क्यों करते हैं, क्यों ऐसे करना है, ऐसे करने से क्या फायदा. अगर आप कुछ रीजन नहीं दे रहे बिहाइंड दैट वर्क, ये लोग नहीं मानते. ऐसे करना है, सिंपली इफ यू टेल ये चीज को ऐसे करना है, देन इफ यू डोंट गिव रीजन और रैशनल, then these people will not accept. आपको rationality देना है, why this drug should be used in this condition. Simply diarrhea हो रहा है, you use this medicine, then these people will not accept. They will ask reason why I should use this medicine in this condition. Then you have to give reason or rationally, then only they will accept. That is the concept of realism or rationalism. These people क्या करते हैं, reason and knowledge का ऊपर stress देता है. And this theory states that all our concept and knowledge come from the experience. Experience मतलब work करते करते हमारा concept and knowledge कम आता है. And these people will ask for the reason and rationally for the this particular experience or work और knowledge के पीछे क्या reason है, क्यों हमको ऐसे ही करना है, इसके ऊपर reason देना पड़ता है, rationally देना पड़ता है. Without reason and rationally they will not accept that knowledge or that outcome. अगर एजुकेशन ले रहे आप, कुछ तो सीख रहे, क्यों मैं ये सीखा, क्यों ये इसका पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, रैशनल क्या है, आपको पता नहीं है, तो दैट इज द वेस्ट ऑफ दैट एजुकेशन और दैट लर्निंग. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रियलिज्म और रैशनलिज्म. सो लास्ट वन इज एक्सिस्टेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस मी आल्सो, द एक्सिस्टेंशियलिज्म. सो क्या है इस पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, it is an approach that emphasizes the existence of an individual as a free person and who is a responsible agent that determines their own development through the act of will. इसका मतलब मैं सिंपली समराइज करता हूँ. एक्सटेंशियलिज्म का मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल
अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल इज ए फ्री पर्सन। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल एज ए फ्री पर्सन। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, हर एक बच्चे इंडिविजुअली फ्री है। एक ही मेथड से हर एक बच्चे को हम स्टडी टीचिंग नहीं कर सकते, एक ही मेथड से 10 बच्चे लर्न नहीं कर सकते। एजुकेशन हम एवरी पर्सन को एक ही तरह का एजुकेशन नहीं दे सकते। हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल इज फ्री पर्सन, और इंडिविजुअल एंटिटी हम कहते हैं ना, प्रकृति 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 वीक्षण है ना, हर एक पुरुष अलग अलग है बेस्ड ऑन प्रकृति दोष। हर एक को हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेडिसिन बोल रहे हैं ना आजकल, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। हमने मेडिसिन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, दैट कॉन्सेप्ट। अगर हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, फ्री पर्सन है, then how the same teaching method will effective for all these persons? That is the question of this extensionalism persons को। so individual person different है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को या उनका तरीके से हम टीच करना है, एजुकेशन देना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सटेंसिवलिज्म। दैट्स व्हाई इन टीचिंग मेथोडोलॉजी वी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम कंसीडर करके ही टीच करना है। ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है, इंडिविजुअल डिफरेंस। दैट एप्लीकेशन कम्स अंडर हियर। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, इंडिविजुअल इज ए फ्री पर्सन। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, ये हमको क्लास में ध्यान रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ में रख के हमको क्लास करना है। दैट वी ऑलरेडी लर्न दिस इंडिविजुअल डिफरेंस। इनका सिद्धांत का अप्रोच क्या है, हर एक इंडिविजुअल इज फ्री पर्सन। सो दैट्स व्हाई इनका ग्रोथ और उनका नॉलेज के लिए वो खुद का खुद जो रेस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशनलिज्म। सो इसका प्रोपोनेंट क्या है, डॉक्टर राधा कृष्ण स्टार्टे वेयर सपोर्टर्स ऑफ दिस एक्सटेंशनलिज्म। ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। सो एक ही मेथड ऑफ टीचिंग हर एक को टीच करने में हेल्पफुल नहीं है। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, कंसिडरिंग द इंडिविजुअल कैपेसिटी, वी शुड टीच द स्टूडेंट्स और लर्नर्स, देन ओनली इट विल हेल्पफुल। सब लोग एक ही नहीं रहते, इसका कहना कि क्या है, इंडिविजुअल एज ए फ्री पर्सन। सो एक्सटेंशनलिज्म का सिद्धांत क्या है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। सो उनका अलग वे रहते हैं लर्निंग करने के लिए। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, ऑल आर नॉट सेम। दैट्स व्हाई सो वेरिएशन कंसीडर करके ही हमने क्लास में हमको टीच करना है। दैट इज द एक्सटेंशनलिज्म। सो इस लोगों ने क्या प्रपोज करता है, हर एक का व्यक्ति का टीचिंग मेथड्स, हर एक पर्सन को टीच करने के लिए हम अलग अलग मेथड ही यूज करना पड़ता है, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट मच, एक एक स्टूडेंट को एक एक तरीके से हम बता नहीं सकते, बट ओवरऑल वी विल कैटेगराइज स्लो लर्नर्स, मॉडरेट लर्नर्स एंड high level highly active students. So like that we will differentiate and we will teach. बट इन लोगों का कहने का मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल इज डिफरेंट और इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। अभी मेडिसिन में भी ये कॉन्सेप्ट आया है, हर एक आदमी को हम पैरासीटामोल देते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल इज अलग, फिर भी हम पैरासीटामोल सबको दे रहे हैं ना। सो पैरासीटामोल इज वर्किंग डिफरेंटली, एटलीस्ट समथिंग डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। सो दैट्स वाई इंडिविजुअल ट्रीटमेंट और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा आयुर्वेद में और अलग मेडिसिन में आ रहा है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ये कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक आदमी मेडिसिन को डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करता है, दैट इज इंडिविजुअल मेडिसिन। सो लाइक दैट इंडिविजुअल लर्निंग और इंडिविजुअल एजुकेशन होता है इनका थ्योरी के अनुसार। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म। So last slide, yes, some concept of education and its का मेन प्रोपोनेंट क्या है, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम का बारे में अलग अलग लोगों ने बताया है। कौन कौन है, सिर्फ आई विल सिंपली टेल द नेम ऑफ दैट सिस्टम एंड उनका प्रोपोनेंट कौन है। बेसिक एजुकेशन का बारे में और वार्धा एजुकेशन सिस्टम, इसका बारे में महात्मा गांधी जी ने बताया। व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन क्या होना चाहिए एक आदमी को, that concept is given by the Mahatma Gandhi. Learning to take place from nature and in nature,
लर्निंग नेचर से होता है, नेचर के अंदर ही करना पड़ता है, दैट इज द रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रल एजुकेशन, श्री अरविंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। एम्फेसिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हमने एम्फसाइज करना है एजुकेशन में। अगर एजुकेशन अच्छा होना है तो इंडियन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है उसको हमने एम्फसाइज करना है एजुकेशन में। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, एजुकेशन हम इसलिए देना है ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन माइंड। ये कौन बोला है? कृष्णमूर्ति। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंस करके लर्न करना है। दिस कॉन्सेप्ट कौन बताए? जॉन डीवे। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, जस्ट you should know the different concept of education who proposed that. Self education through development of individually, मोरिया मॉन्टेसरी, ये आदमी और दिस स्कॉलर proposed self education through development of individuality. Kindergarten focus on self activity, creativeness, social cooperation. ये फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और एजुकेशन ने फ्रोबेल ने बताया है। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर। ये रोसो ने क्या बताता है? इन अकॉर्डिंग टू हिम नो फॉर्मल लर्निंग, हम कॉलेज जाकर लर्न करते, कॉलेज स्कूल जाके लर्न करते, वो नहीं है। एक्चुअली वैसा नहीं होना है हमारा लर्निंग। नेचर इज द ओनली टीचर बिकॉज ही इज ए नेचुरलिज्म। सो रोसियो ने ये कॉन्सेप्ट देता है। इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लेना है नहीं लेना है ये अलग बात है। सो दे आर गिवन देयर थॉट एंड देयर विचार, उनका थॉट वो शेयर किया है फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर वो लोग अलग अलग थॉट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। अरिस्टोटल क्या कहता है? एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। अगर आप सिर्फ माइंड ब्रेन को एजुकेट कर रहे हैं विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज ए नो एजुकेशन एट ऑल। Education is not the learning of facts but the training of the mind to think. According to Albert Einstein क्या है? Education is not the learning of facts about training of mind को train करना है to think. अलग अलग व्यक्तियों ने उनका नेचर और उनका थिंकिंग और उनका पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग ओपिनियन दिया है व्हाट इज द एजुकेशन। An educated person I think is one who not only knows a lot but knows how to do a lot of things. हेनरी फोर्ड ने ये कोट बताया है। स्वामी विवेकानंद ने बताता है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। परफेक्शन ऑलरेडी ह्यूमन में रहता है। द मैनिफेस्टेशन, एजुकेशन दैट मैनिफेस्टेशन बाहर निकालता है एजुकेशन से, दैट इज द रियल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद कहता है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, गांधी जी क्या कहता है? एजुकेशन इज एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बच्चे और आदमी के ऑल अराउंड बेस्ट करवाता है बाय बॉडी, बाय माइंड एंड बाय स्पिरिट। दैट इज द concept of education according to Mahatma Gandhi. He advocate the literacy should never be the end of education or even the beginning. अगर आपने कुछ डिग्री किया, कुछ सर्टिफिकेट लिया, that is not education according to these philosophers. Education is the thing what they are telling, that is the entire aspect. They are covering the entire aspect, broad aspect. They are giving these options. I have done my MD but I don't have any humanity, then I am not educated. I am a literate but I am not educated. I don't know how to respect elders or any moral values. Simply I am a MD but I am a literate but I am not educated. So that is the concept. Education is an all around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. महात्मा गांधी ने शरीर, मन और आत्मा तीनों का बेस्ट को तीनों एस्पेक्ट में ऑलराउंडर बनाता है एक पर्सन को। दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन को इतना पावर है, बॉडी माइंड स्पिरिट को बेस्ट बनाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सो वी विल
can I take some 10 minutes? So this session will, I can finish this session. In next class, we can do another new topic. Simply 5-6 Yes, sir. are there. I will go through based on what we are discussed today. Based on that only these questions are there. So see question 1. There is a list 1. There is a list 2. ए में क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग. ये कौन बताया है, इस पे किसके साथ मिक्स मैच होता है. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है क्लासिकल कंडीशन कौन बताया, ऑपरेंट कंडीशन. अगर आपको एक भी नाम पता है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लासिकल कंडीशन पावलोव का नाम पता है आपको. इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशन को प्रपोज किया, ये बताया मैंने क्लास में. सिर्फ आपको ये नाम, ये कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अदर theories कौन बताए ये पता नहीं है तो भी आपको ये सॉल्व करने को होता है. मैंने क्लासिकल कंडीशन के बोलने के टाइम बोला था, क्लासिकल कंडीशन इज टोल्डन बाय इवन पावलोव theory ऑफ कंडीशनिंग. पावलोव ने एक डॉग को बांधा और कैट को लिया, बेल एंड फूड का एक एक्सपेरिमेंट किया, ही इज ए फिजियोलॉजिस्ट बोल के बोला था. सो क्लासिकल कंडीशन इज टोल्डन बाय द इवन पावलोव. ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में, ए का ऑप्शन 2 है मैच, ऑप्शन 3 सी दी, ऑप्शन 3. अगर आपको एक ही आंसर पता है तो यू कैन सॉल्व दी होल क्वेश्चन. सो नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशन कौन बताया है, स्किनर ने बताया, ही इज ए साइकोलॉजिस्ट. ऑपरेंट कंडीशन कौन बताया, स्किनर. सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडोरा का थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी. व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी, the child or person will see the society and learn the something. The child will see the parents, teachers, elders and learn the behavior like them. So that is the social learning theory. Who proposed this, Albert Bandura. C is 1. D, constructivism. It is given by the Leo Vygotsky. So even I don't know who is proposed which theory, but simply I know these two. One, classical condition by Pavlov, ऑपरेशन कंडीशन बाय स्किनर. 2 ही पता था. स्टिल आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज ए इज 2. दूसरा कोई ऑप्शन में ए इज 2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 को मैं डायरेक्टली मार्क कर सकते. समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देखो चारों का प्रपोजल कौन है प्रोपोनेंट पता नहीं है तो भी सिंपली 1 और 2 आपको पता है, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. समझ में आ गए. हेलो. Yes, sir. क्लासिकल कंडीशन बोलने के टाइम में बोला था, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, पावलोव का नाम बोला था मैंने, ही इज ए फिजियोलॉजिस्ट बोल के. अगर वो आपको याद है क्लासिकल कंडीशन इज इवन पावलोव ने प्रपोज किया है. सो ये 2 के साथ मैच होता है. कौन सा ऑप्शन में 1 के साथ 2 मैच होता है, ऑप्शन 3. बाकी सब ऑप्शन में 1 के साथ 2 नहीं दिया है किधर भी. सो यू कैन डायरेक्टली मार्क दिस आंसर बिकॉज यू आर नोइंग ओनली वन concept, you can able to answer this question. Then question 2, key behavior constructing to effective teaching. These are the key behavior study किया है ना हमने आज, key behavior and helping behavior for effective teaching. So ये लिस्ट में key behaviors दिया है, उसका फीचर्स क्या है ये लिस्ट 2 में दिया है. लेसन क्लैरिटी का मतलब क्या है हमने डिस्कस किया ना, लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. सो किसके साथ मैच होता है डिस्क्रिप्टिव फीचर्स 1 2 3 4 में. कैन एनीवन टेल. लेसन क्लैरिटी छोड़ दो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी तो आपको समझ में आ गए ना. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब क्या है, so engagement in the learning process. These are the key behaviors for effective teaching. So इसका description क्या है वो पूछ रहे हो. Then student success rate होना चाहिए ना 60 to 70%. इसका description क्या है देखो. student success rate हमने कैसे describe कर सकते, frequency with which students understand the correctly complete exercise. सो स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब क्या है, कितना लोग, फ्रीक्वेंसी कितना स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड किया है करेक्टली कंप्लीट एक्सरसाइज.
दैट इज द स्टूडेंट सक्सेस रेट। समझ में आ गया आपको? हेलो 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 Yes, sir. हेलो। स्टूडेंट सक्सेस रेट किसके साथ, 1 के साथ मैच होता है, 2 के साथ मैच होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डिवोट इन लर्निंग इन द क्लासरूम, ये मैच होता है। और फ्रीक्वेंसी विथ विच स्टूडेंट्स अंडरस्टूड एंड करेक्टली एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज, इसके साथ मैच होता है। लेसन क्लैरिटी, देखो लेसन क्लैरिटी का मतलब क्या है? लेसन क्लैरिटी को क्या डिस्क्रिप्शन फीचर हम ये कर सकते हैं? एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इसके साथ मैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3 दोनों में हिंट है। कौन सा सूट होता है? ये 4 के साथ मैच होता है। लेसन क्लैरिटी, डायरेक्ट ऑडिएबल ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स। B3, teacher flexibility of the delivery during the presentation of a lesson. C, engage in the learning process to the amount of time students devote in the learning in the classroom. Student success rate, frequency with the which students understood the correctly complete exercise. So option, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होता है इधर? 1. लेसन क्लैरिटी को मतलब क्या है, फीचर्स क्या है ये का? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 का बीच में कंफ्यूजन है हमको। सो ऑप्शन ए में देखो, ये 4 के साथ मैच होता क्या, लेसन क्लैरिटी, और ये 2 के साथ मैच होता क्या, ये हमको देखना है। लेसन क्लैरिटी मैच विथ दिस डायरेक्ट ऑडिएबल ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स। सो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है? टीचर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरह की मोड ऑफ डिलीवरी से टीच करता है। दैट इज द वैरायटी ऑफ टीचिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो इधर करेक्ट ऑप्शन इज ए। Still you have to mark option 3 also. Even I am also confusing, but more or 80% the option 1 is correct. We will I will provide the answer key, I will find the answer key and I will give you in the group. But now you should mark the option 1, that is the this one is the correct one. Then question 3, from the following identify those characteristics which go within the category of helping behavior for becoming an effective teacher. हमने 2 तरह का बिहेवियर पढ़ाई किया था, की बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर। इन ABCDE में कौन सा बिहेवियर हेल्पिंग बिहेवियर में जाता है? स्ट्रक्चरिंग वेदर की बिहेवियर है, हेल्पिंग बिहेवियर है? Key behavior. हाँ, Key behavior. की बिहेवियर। नेक्स्ट, स्टूडेंट सक्सेस रेट, की बिहेवियर है, हेल्पिंग बिहेवियर है? So effective keywords: lesson clarity, instructional variety, teacher task orientation, engagement in the learning process, student success rate. These 5 are key behaviors. What are the helpful behaviors? Using student ideas and contributions, structuring, questioning, probing, teacher effect. These are helping behaviors. Now you can solve this question. Structuring helping behavior है, की behavior है? अभी बताओ। Helping behavior. Helping behavior. Student success rate,
Key behavior. using student ideas, helping behavior है, probing, helping behavior, The helping instructional behavior. variety is a key behavior है. इधर क्वेश्चन क्या पूछा है, हेल्पिंग बिहेवियर क्या क्या है. हेल्पिंग बिहेवियर में ए आता है स्ट्रक्चरिंग, नेक्स्ट यूजिंग स्टूडेंट आइडिया सी आता है, देन प्रोबिंग डी. ए सी डी किधर है ऑप्शन, ऑप्शन 4 ए सी डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. Yes, sir. अगर आपको याद है, रिमेंबर की बिहेवियर्स क्या है, हेल्पिंग बिहेवियर, देन इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Then this is the Morrison's teaching model. So it needs some explanation. I will take this question in the next class because already the time is over. So this needs some explanation. That's why I'm not taking this question now. You can solve this question. Question number 5. Below are given a number of key behaviors as well as helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidence. Identify those which are key behaviors and indicate your answer by selecting from the code. इस पे की बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स का लिस्ट दिया है, विच आर की बिहेवियर्स है उसको हमने सेलेक्ट करना है. स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय टीचर इन द रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज टू कम. स्ट्रक्चरिंग हेल्पिंग बिहेवियर है, की बिहेवियर है. Helping behavior. क्वेश्चनिंग थ्रू कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चनिंग कौन सा है, हेल्पिंग बिहेवियर है, की बिहेवियर है. Key behavior. की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर है. Okay. You can, I can share slide, then you will remember. So lesson clarity. This one is key behavior. All of you remember. First key behavior is lesson clarity. Then probing is also helping behavior. Engagement rate developed due to learning when students are actually on task. This is key behavior. Rate at which students understand and correctly comprehend the assignment exercises. F, E, and C. These are key behaviors. C, E, and F are key behaviors. So correct option is 4. C, E, F are the key behaviors. Question क्या पूछे? Which are the key behaviors? So based on key behaviors and helping behaviors, lot of questions they will ask. That's why it is important. And it is easy also if you remember these key behaviors and helping behaviors. It is very easy to solve this question. इसमें भी वही पूछा है, which of the following is an indicator of key behavior in effective teaching as evident from the resources. Teachers' emotionals in developing relations between teacher and student, whether it is a key behavior or helping behavior. Engagement in the learning by student, using the student ideas and contribution, use of process and content question during the teaching. Key behavior कौन सा है इस पे? Student ideas helping behavior है. Engagement in learning by student. टीचर्स इमोशनलिज्म एंड डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी नहीं, ये तो हेल्पिंग बिहेवियर है, ये तो यूज नहीं होता है. तो यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग टीचिंग. तो 2 में क्या है, एंगेजमेंट इन द लर्निंग बाय स्टूडेंट, ये की बिहेवियर में आता ना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. So option 2. Yes, sir. So which of the following is the key behavior contributing the effective teaching? Summarizing what was told by student, summarizing, encouraging student to elaborate to an answer. It is nothing but probing. Probing बोले ना, probing का बोले. Probing is helping behavior. Directly they are not even probing. Encouraging the students to elaborate on an answer is nothing but probing. The student answer देता है, हमने probe करते हैं, हाँ, can you elaborate that answer? Can you give more ideas about that answer? That is the probing, nothing but helping behavior. Using direct and indirect questioning. Questioning comes under helping behavior. Whether it is Helping direct or behavior. indirect, whether it is direct or indirect, we don't bother. Questioning comes under the helping behavior. Explaining concept in a logical step-by-step presentation. First one तो नहीं होता. Summarizing what was told by students. Student का feedback and student का ideas बोल के है ना helping behavior. उसका आधार पर ये सेंटेंस है, समराइजिंग व्हाट टोल्ड बाय द स्टूडेंट.
not feedback, summarizing कर रहे, feedback नहीं दे रहे हम. Then what is the correct option? Explaining concept in a logical step-by-step presentation is the Four. key behavior. That is the fourth option. All of you understood this question answers? Yes. So based on this concept, they will ask the questions like this. So I will share the slide and um, mm, recordings tomorrow. Slide I will share now. Recording tomorrow I will share. So please study this concept. These are the simple and very important one. So now I will stop recording. So I will also stop this class. So any doubt you may ask.